amount invested for that purpose still today. Honorable Minister. Jesus. Please, please. Madam, please, no cross talks. No, please, please. No, nothing will go on record. 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 Yes, Honorable Minister, please continue. Only what the Honorable Minister say will go on record. जैसा माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, Honorable Minister. और मैंने कुछ पहले सप्लीमेंट्री के प्रत्युत्तर में भी निवेदन किया था कि पहले खर्च करने की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक एक्सपेंडिचर्स is the onus of state government, and after spending the money on different components of construction, the state government raises the bill with PPAP, Polavaram Project Authority, and then it comes to the government of India. But for the sake of answering the question which has been asked by honorable member, I wish to submit that in 2021, 2,234 crores have been released to PPA, and the same amount has been released to Government of Andhra Pradesh as reimbursement by PPA. In 2021-22, 751 Mr. crores Shakti and Singh Gohil, 47 crores take have your been seat. released. Dipender Huda, And you are getting used to creating in 20 chaos to unnecessarily. 1,671.323 crores have been released to PPA, and further PPA released the same amount to Government of Andhra Pradesh. Take your seat. In current financial What year word are you using? 23-24, so far No, I am surprised. 7 crore rupees have You been are released using these kind of words in this by house. Government of India to Polavaram These are Project expense. Authority, Expense. and a similar amount Sorry. has been transferred by Take your seat. Polavaram I'll come Project back. Authority I'll to come back to Government you of after Andhra this Pradesh. question is over. Please take your seat. I'll come back to you. I'll come back. Take your seat. Nothing will go on record. You are not her spokesperson. She herself is a very senior member. No, you don't have to support her. She's a very senior member. Sorry. Please continue. Honorable Minister. Doctor, 1 second. Take your seat. Take your. Would you take your seat? Should I name you? Mr. Dipender Huda, I will name you. Please. No. What do you mean by it? Sit down. Honorable members, please take your seat. Rao Saab, on your seat. Take your seat. I have already indicated that after I am through with question number 19, I will take up this issue. When we will take up this issue, in a composed manner, try to find a way out. Jaya Bachchan is a very senior member. If she has a sentiment that is bound to be very serious with me, let me go through question number 19, then I'll come to question number 18 and the concerns that are being raised. Please. Dr. C.M. Ramesh. Sir, I have gone through the answer. This diaphragm wall was damaged in 2020. What are you- Now we are in Have you- 2024. Have you not understood me? I can't help you. Studies. Sorry. Please continue. This is very important for Andhra Pradesh. When it will be completed, when the diaphragm all details will come. Only the diaphragm wall damage since last 4 years. The 4 years the project is stalled, sir. When it will be completed, when the diaphragm wall details, national agency, international agency, when they will give. Honorable Minister. जो माननीय सदस्य ने कहा है कि डायफ्राम वॉल 2020 के बाढ़ के समय में डैमेज हुई थी, लेकिन जब उस पर काम करना प्रारंभ किया था और ये विषय संज्ञान में आया, उसके बाद भारत सरकार के नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के जो है विशेषज्ञों ने जाकर के वहाँ इस विषय पर पूरा अध्ययन किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है
दो तरह के ऑल्टरनेटिव्स उसमें दिए गए थे कि एक जो एग्जिस्टिंग वॉल है उसी को रिपेयर किया जाए और दूसरा जो था कि नई डायफ्राम वॉल बनाया जाए, क्योंकि डायफ्राम वॉल किसी भी बांध की स्पाइन या रीढ़ की हड्डी के जितनी इंपॉर्टेंट होती है। इस विषय में कहीं भी कोई, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी लिख करके दिया है कि जो कंसेशनर है, जो कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि अगर इसको रिपेयर किया जाए तो ये बांध के भविष्य को लेकर के उचित होगा या नहीं। हमने इंटरनेशनल एजेंसीज को हायर किया है और उसकी प्रक्रिया प्रारंभ की है। उसकी रिपोर्ट आने के साथ ही इस दिशा में, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है और इसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी बांध के भविष्य को लेकर के एक जो है समस्या हो सकती है, इसलिए उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और शीघ्र ही उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर फौजिया खान। Sir, is it true that the World Bank has come with a report that has indicated that by 2030 per capita water availability in India will shrink to half and push the country into water scarce category from the existing water stress category? Sir, in Marathwada in Maharashtra, this is a water scarce area, and what measures are proposed to augment the regulation and storage capacity of the Jaikwadi Dam to alleviate the water scarcity in the Marathwada region and bridge its divide with the North Maharashtra? Honorable Minister. महोदय, हालांकि मूल प्रश्न पोलावरम से संबंधित था, लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी आज़ादी के समय में जितनी थी उससे घट करके निश्चित रूप से कम हुई और उसके अनेक कारण हैं। वर्ल्ड बैंक की जिस रिपोर्ट की माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, उनके उसमें कितना तथ्य और उन्होंने किन विषयों के आधार पर या किस अध्ययन के आधार पर वो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, मैं उसके विषय में नहीं जाना चाहता विस्तार से, लेकिन इतना अवश्य निवेदन करना चाहता हूं कि जो है 2030 तक या 2050 तक भी जिस तरह की चिंताजनक स्थिति की कल्पना माननीय सदस्य ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के आधार पर की है, वैसी स्थिति नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दृष्टिकोण से कि देश की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए पानी की उपलब्धता को हम सुनिश्चित कर सकें और आने वाले समय में भारत जिस तरह से 2047 तक विकसित होने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है, उसमें पानी की आपूर्ति कहीं बाधा न बने, इस दृष्टिकोण से पानी का विषय जो अलग अलग मंत्रालयों में अलग अलग विभागों में जो है निर्णय किया जाता था, उसको एक साथ मंत्रालय बनाया गया और पानी के परिप्रेक्ष्य में जितने तरह के जो है कंपोनेंट्स हैं, उन सब पर भारत सरकार अलग अलग जगह पर अलग अलग दिशा में काम कर रही है। उसमें अनेक उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त हुई हैं। धरातल पर पानी रोकने के दृष्टिकोण से भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हमने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है और भारत की सबसे ज़्यादा निर्भरता, विश्व में सबसे ज़्यादा निर्भरता जो है वो भूगर्भ के जल पर है। और मैं माननीय सदस्य के लिए और सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह के एफर्ट्स पिछले 10 साल में लिए गए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बार बार इस विषय पर चर्चा की गई, देश में इस तरह का वायुमंडल बना, पानी के रिचार्ज को लेकर के जो वायुमंडल बना, उसके चलते हुए मैं प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि जो भूगर्भ के जल का स्तर निरंतर देश में गिर रहा था, हमने हर साल का अध्ययन करना प्रारंभ किया है। पिछले 4 साल से पहले वो स्थिर हुआ था और अब अपवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है। जहां पानी की कमी हो रही थी हर साल, वहां अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में आखिरी रिपोर्ट आने तक, पिछले साल की रिपोर्ट में भी और इस वर्ष की रिपोर्ट में भी अपवर्ड मूवमेंट हुआ है। हमारे सेफर ब्लॉक्स और ओसीएस कैटेगरी के जितने ब्लॉक्स थे उन सब में इंप्रूवमेंट हुआ है और 10% से ज़्यादा ब्लॉक्स जो हैं वो हमारे ओसीएस कैटेगरी से बाहर निकल करके सेफर जोन्स में आए हैं। मैं ये नहीं कहता कि यह संपूर्ण सफलता है, लेकिन जिस दिशा में हमने प्रयत्न किए हैं, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उसके परिणाम स्वरूप उपलब्धता, भूगर्भ के जल की उपलब्धता की दिशा में हम सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ पाएं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जिस तरह से सप्लाई साइड मैनेजमेंट के साथ साथ में डिमांड साइड मैनेजमेंट पर पहली बार अटल भूजल योजना के तहत काम करना प्रारंभ किया है, उसके परिणाम भी अब दिखाई देने लगे। लेकिन निश्चित रूप से ये, क्योंकि संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य सरकारों का विषय है, राज्य सरकारों को इस पर और अधिक गंभीरता और प्राथमिकता के साथ में काम करना पड़ेगा। पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो, उसके लिए सबसे बड़े उपभोगकर्ता कृषि क्षेत्र में हम पानी के उपभोग को किस तरह से कम कर सकते हैं, इस पर राज्य सरकारों को समन्वित दृष्टिकोण से प्रयास करना पड़ेगा। श्री GVL
Narasimha Rao. Thank you, Chairman, sir. Sir, this question relates to Polavaram irrigation project in Andhra Pradesh. And a number of irrigation projects in Andhra Pradesh have been languishing, and what projects which state government was required to undertake have not been done for 60 years. I'd like to congratulate and compliment the government and Honorable Prime Minister Modi ji for sanctioning huge amount of funds for Polavaram irrigation project as a central project, national project. I'd like to ask the Honorable Minister the amount of money that has been released so far under Polavaram irrigation project, and I have requested in the past to name it as Pradhan Mantri Modi Polavaram irrigation project, because this project, every rupee on this project is being spent by the central government. So I would like Honorable Minister to respond to my appeal to name it as Pradhan Mantri Polavaram irrigation project, and whether central government will take over the construction of the project, because the state government has not been moving fast Honorable enough Minister. in completion of the project. Thank you, sir. Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है कि अब तक भारत सरकार ने इस पर कितना खर्च किया है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 2014-15 में जब इसे भारत सरकार ने नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में मान्यता दी थी, तब से लेकर के अब तक 15,146 करोड़ रुपए की वित्तीय एलोकेशन भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की दिशा में दे चुका है, जो आंध्र प्रदेश सरकार को भारत सरकार की तरफ से दिया गया। Honorable members, I'll now take question number 18, which could not be taken on account of certain technical situations. But I would like to reassert that we have in Harivanshji a man of impeccable credentials, a man of great integrity. Human failure is something which is associated with all of us. If it has hurt someone, I take the responsibility, but I will indicate to all of you, think within, we could not have had a deputy chairperson with more sterling qualities, independence more than I have, and respect for all the members. It was slightly hurtful for me that some reflections came to be made about such a person. If there are some hard feelings, we need to forget about it. Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde, question number 18. All right. I'll give floor to Jaya Bachchan ji. And I would request Jaya Bachchan ji. Thank you very much. Jaya ji, 1 second. You are a very senior member. Ji. Even otherwise in the country, whatever you say is looked up to and well regarded. So you Thank will you very cheer us, much. all of us. अच्छा सर मुझे बोलने तो दीजिए, आप ही बोले and ज़्यादा, I am मैं sure खड़ी हूँ। a great actor like you must have taken money retakes also. सर Money retakes. सर डेप्यूटी चेयरपर्सन के लिए बहुत रिगार्ड है, और आज से नहीं बरसों से उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। उनके बारे में हमने कुछ नहीं कहा। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहेंगे हम बैठ जाएंगे, डेप्यूटी चेयरमैन कहेंगे हम बैठ जाएंगे, मगर कोई और सदस्य हाथ हिला के अगर हमें बोले तो हम नहीं मानेंगे। दिस इज आवर राइट टू क्वेश्चन। यू टेल अस कि ये सवाल नहीं ले सकते, देयर आर प्रॉब्लम्स, वी विल टेक इट लेटर, वी अंडरस्टैंड, वी आर नॉट स्कूल चिल्ड्रन, बट treat us respectfully. Point made. Thank you. Honorable members, I think no one will disagree with the sentiment. The House is under the control of rules and the person presiding. And I am sure everyone will follow. This is a good manner, this side or that side. The members must not exchange inter-se. Everything has to be through the chair. Question number 18, Dr. Anil Sukhdev Rao Bonde. Not present. Honorable Minister. On the table of the House. Supplementary, Saket Gokhale.
Thank you, sir. Sir, my question is, in the interim budget 2024 that was presented by the Honorable Finance Minister, allocation for the Udan scheme has been slashed by 60%, 60%. Of the 1,300 valid routes allotted under Udan 5.0, 501 routes have been cancelled already. So my question is, sir, why has the budget for Udan been reduced by 60% from 1,244 crores to just 850 crores? And number two, what steps are being taken to revive the 501 cancelled routes which are allocated under Udan 5.0? Honorable Minister. Question on budget, but let me clarify. Where Udan scheme is concerned, 529 routes are already operational. No route has been cancelled. There is a system in place by which the routes are allocated. And I'll state the system is as follows. There is a valid bidding that is done. Airlines are called to bid for a particular route. If an airline bids for a particular route, that route is allocated to it. Based on this, an underserved or unserved airport is made up in terms of whatever facilities are required by the AAI so that the flights can take place from that particular airport. Now, if that airline walks away from that route, the bidding takes place again in the next round of bidding. So there is no route which has been allocated, no route which has been cancelled. It all depends on bidding and the aircraft. Sir, will you please... Not a good... Please, let the minister complete. What is this? Mr. Gokhale, 1 second. Is it according to rules? You don't hear the minister out? Please. You must maintain some decorum. Let the minister complete. If you still have an issue, rules provide for a mechanism. Please, Honorable Minister. And there is no pre-allotment of routes anywhere. I'd like to underline that aspect. The airlines, if they walk away from a particular route, after a particular period of time, that route is bid again. An airline has 2 years to start a particular route. If it doesn't start a route, it goes into the next bidding. And therefore, that route remains unutilized till the time the next bidding takes place. Vandana Chauhan, please. Vandana Chauhan. Sir. Vandana Chauhan. Will you first take your seat? First, 1 second. Will you first take your seat? First, no, I am saying take your seat. First you take your seat. Is it the way to conduct proceedings? Sit down first. Sit down first and listen to me. If a minister responds to a question and if an honorable member, for one reason or the other, is not satisfied, that could be on several grounds. One, not understanding the perception of the minister, or the minister not responding adequately. In both the situations, it is not the mechanism to jump on the chair. One second. Sit down. You still don't understand. I'm sure senior leaders of your party will persuade you to maintain decorum. Vandana Chauhan. Thank you, sir. Sir, every airport is supposed to have proper maintenance and service delivery for its commuters, sir. I would like to raise the question, particularly in the case of Pune Airport, which I've raised several times in this house. So the Pune Airport has been seeing deteriorating quality, and the rank has been slipping down lower and lower. Now it is 17th position in a survey conducted by the Airport Council International. So I would like to ask the Honourable Minister, what are the steps being taken for such slipping down ranking airports, and particularly for the Pune Airport, which is still to see the light Honourable of the day, Minister. actually. We are still using the Air Force Airport. Overall question does not pertain to maintenance of airports and all other things. Nevertheless, I noted this point, and I'll convey to the member as to what action has been taken. Shri Rajiv Shukla. जी, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि महाराष्ट्र राज्य में शिरडी नामक बहुत जो है धार्मिक स्थल है, जहाँ बहुत लोग जाते हैं, शनि शिंगणापुर के लिए भी जाते हैं। वहाँ की अभी तक जो है एयर सुविधा है, पहले तो थी नहीं, अब कुछ एयरपोर्ट बनाया, बहुत कम फ्लाइट की सुविधा है, जबकि लाखों लोग उत्तर भारत से वहाँ जाते हैं। तो शिरडी के लिए वो क्या सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, कृपया ऑनरेबल मिनिस्टर करेंगे।
चेयरमैन सर, दी शिरडी का एयरपोर्ट जो है वो महाराष्ट्र सरकार के नीचे है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नीचे नहीं है। और जो भी फ्लाइट जितनी भी बनती हैं किसी भी एयरपोर्ट के लिए या किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो एयरलाइंस के ऊपर निर्भर करता है। एयरलाइंस कहाँ से कहाँ पर ले जाना चाहते हैं, अपने रूट को देखते हुए, अपने हवाई जहाज़ों को देखते हुए, अपने खर्चे को देखते हुए, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। हम जैसा कि मेंबर ने कहा है, उसके लिए अलग अलग एयरलाइंस को बोला जाएगा। अगर वो इसके अंदर और इजाफा करना चाहते हैं नंबर ऑफ फ्लाइट्स के अंदर, उनको बता दिया जाएगा। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। so much. सर, मेरा सवाल पुणे से जुड़ा हुआ है और शिरडी को लेकर जुड़ा हुआ है। पुणे के ओल्ड एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल 5 महीने से तैयार है, पर उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, तो इसमें ये डिले क्यों हो रहा है? दूसरी बात, हमारी जब सरकार थी तब हमने एक नई बिल्डिंग प्रपोज की थी, उसको इन्होंने स्क्रैप कर दिया। क्योंकि ये महाराष्ट्र का ही सवाल है, इसलिए महाराष्ट्र तक ही सीमित रख रही हूँ सर। शिरडी का भी अभी कहा गया कि वहाँ योर सप्लीमेंट्री सर, ये पुणे और शिरडी का कहा गया राज्य सरकार के अंतर्गत है, तो राज्य सरकार की आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि सिविल एविएशन उनसे सवाल नहीं पूछ सकता है? योर सप्लीमेंट्री सर, supplementary is this. Why is the new airport terminal All right, not Honorable being Minister. inaugurated? Why is it waiting for an inauguration for 5 months? पुणे के इनॉग्रेशन के लिए 5 महीने का इंतजार नहीं हो रहा है, वहां पर काम चल रहा है, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, श्री सुजीत कुमार। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। सप्लीमेंट्री 1, श्री सुजीत कुमार। सर, टेक फॉर ट्राइबल करके एक बहुत सुंदर इनिशिएटिव एमएसएमई मिनिस्ट्री ट्राइफेड के कोलैबोरेशन में शुरू किया था। सर, ये इनिशिएटिव जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका आईटी स्किल, उनका बिजनेस स्किल्स और सॉफ्ट स्किल बढ़ाने के लिए सर ये शुरू किया गया था। मैं जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से, ये इनिशिएटिव का प्रोग्रेस क्या हुआ है, कितने ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स इससे लाभ उठा चुके हैं और इसको आगे कितने सालों तक चलाएंगे? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, विशेष रूप से इन्होंने जो बात की है उसके लिए एसटी के लिए, ये जितनी भी योजनाएं एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही हैं पूरे देश के लिए चलाई जा रही हैं, और विशेष रूप से पीएमईजीपी जो योजना है उस योजना के माध्यम से हम लोग जो छोटे छोटे लोग हैं उनकी मदद करते हैं। उस योजना के माध्यम से अगर इसमें अगर देखा जाए तो किसी भी तरीके से हम लोग देखते हैं तो भारत में पूरे देश में जो हम लोगों ने सब्सिडी अगर गरीबों को दी है तो 2.4 हज़ार करोड़ रुपए दी है, और इसमें जो योजनाएं हैं वो करीब 65,000 योजनाएं हैं जिनमें हम लोगों ने मदद की है। और उसी तरीके से रोज़गार अगर दिया है तो 5,52,000 लोगों को रोज़गार दिया गया है। वो विशेष रूप से जो पीएमईजीपी योजना है सर, ये ग्रामीण के लिए और शहरी के लिए इन दोनों में सब्सिडी का अलग अलग प्रावधान किया गया है। अगर शहरी कोई एरिया है और जनरल लोग हैं तो उसे 15% की सब्सिडी दी जाती है, और यदि वो ग्रामीण में है तो 25% की सब्सिडी दी जाती है। यदि कोई एससी एसटी है, यदि वो शहर में रहता है तो सर उसे 25% की सब्सिडी दी जाती है, और यदि वही ग्रामीण में रहता है तो उसे 35% की सब्सिडी दी जाती है। इस तरीके से इस योजना का क्रियान्वयन पूरे गांव में पूरे देश में किया जा रहा है। अब इन्होंने विशेष रूप से जो पूछा है, आज हम उड़ीसा के बारे में जो हम लोग यहाँ सब्सिडी लेके आए हैं, करीब 69 करोड़ रुपए हम लोगों ने उड़ीसा में सब्सिडी दी है, और विशेष रूप से इस परियोजना में करीब 2,100 परियोजनाओं को हम लोगों ने क्रियान्वित किया है, और करीब 17,500 लोगों को इसमें रोजगार मिला है। सेकंड सप्लीमेंट्री सवाल पूछा था सुजीत कुमार। सर, मैंने सवाल पूछा था टेक फॉर ट्राइबल्स जो स्कीम है उसके बारे में, पीएमईजी के बारे में नहीं पूछा था सर, लेकिन मैं उनसे बाद में आंसर ले लूँगा। सर, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है सर, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का एक रिपोर्ट आया था 2022 में। उस रिपोर्ट में सर दर्शाया गया है कि जो एमएसएमईस हैं उनका सर क्रेडिट गैप है 20 से 25 लाख करोड़ रुपया, और सर ये तो जनरल सर एमएसएमईस के लिए, ट्राइबल लेड एमएसएमईस या ट्राइबल लेड एंटरप्रेन्योर्स इनका क्रेडिट गैप सर क्लोज टू 90% है। तो सर मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ
कि जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी सर अवेल करने के लिए क्या क्या स्कीम सर? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से ट्राइबल जो हमारे लोग हैं उनकी मदद के लिए और पूरे देश में जो हमारी MSME की योजनाएं हैं वो पूरे सभी के लिए विशेष रूप से चलाई जा रही हैं। विशेष रूप से हम लोग देखें तो आज हम लोग TC बना रहे हैं, पूरे देश भर में टेक्निकल सेंटर बना रहे हैं। वो करीब 53 टेक्निकल सेंटर हैं, वो 20 नए बना रहे हैं जिससे 125 करोड़ की लागत से पूरे देश भर में बनाए जा रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग देखें एक्सटेंशन सेंटर बना रहे हैं, 100 करीब वो 10 करोड़ की लागत से बना रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने 6000 करोड़ का बजट रखा है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारी विश्वकर्मा योजना है जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर को लागू की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना लागू की है उसके लिए भी गरीबों के लिए है। ये उन गरीबों के लिए है जो छोटे छोटे लोग हैं और 18 प्रकार के ट्रेड में जो घर बैठे काम करते हैं, उनके लिए करीब 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और उसमें अभी तक रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो करीब 88 लाख का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आगे भी ये रजिस्ट्रेशन बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। आज मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी हमारी सारी चीज़ें हैं, EDP योजना, स्फूर्ति योजना, SC ST हब, ये सब गरीबों के लिए योजनाएं हैं, उनके लिए ये काम कर रहा है। डॉक्टर शांतनु सेन। Sir, through you, my supplementary question on MSME to our respected minister is, though as per national record, West Bengal ranks second in MSME, where we are having nearly 90 lakhs of MSMEs and we have created nearly 136 lakhs of employment through that. My question is, instead of getting proper cooperation, these non-BJP ruled states, why they are being looked after with stepmotherly attitude, sir? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं माननीय सदस्य को कि किसी के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया जा रहा है। ये योजनाएं पूरे देश में चलाई जा रही हैं। जो भी योजनाएं हों, चाहे हमारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हो, चाहे हमारी जो प्रधानमंत्री अभी विश्वकर्मा योजना हो, और जितनी भी योजनाएं हैं उन सारी योजना का क्रियान्वयन बड़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है। इन्होंने अपने बात की है, वेस्ट बंगाल की बात की है, विशेष रूप से वहाँ जितने भी हैं उन्हें सारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज की स्थिति में वेस्ट बंगाल में PMEGP के अंतर्गत जो लाभ इन्हें मिल रहा है, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, चूँकि पश्चिम मिस्टर राणे। माननीय सभापति महोदय, ये प्रश्न जो है ओडिशा का है। ये डिटेल सब मांगा है ओडिशा का। MSME के बारे में अलग अलग स्कीम का इन्होंने डिटेल मांगा है। ये पश्चिम बंगाल का नहीं है, तो बंगाल के लिए वो अलग प्रश्न पूछे, हम डिटेल में इसके बारे में आंसर देंगे। डॉक्टर फौजिया खान। Sir, given the initial challenges faced by MSMEs in setting up digital assets and ensuring cyber security, it is essential for them to enhance understanding and integration of cyber security measures. MSMEs, sir, are facing capital constraints, struggle with a shaky technology base, hindering growth and recognition. In addressing these issues, what measures does the ministry propose to make MSMEs more reliant on technology and overcome growth bottlenecks and add to the economy in full potential? Question hour over. Bills for introduction. Further discussion on the motion moved by Mrs. Kavita Patidar on 2nd February 2024 and the amendments thereto. Shri
Swendu Sekhar Ray. Thank you, sir. At the outset, I would like to respectfully submit that in the address to the both houses of Parliament by the Honorable President of India, I have found after Ek Bharat, Shrestha Bharat and Atmanirbhar Bharat some new coins like Viksit Bharat, used at least 6 times, and Amrit, expressed for about 10 times, such as Azadi Ka Amrit Kal, Amrit Kal of our independence, Amrit Kalash, Amrit Sarovars, Amrit Mahotsav twice, Amrit Batikas, Amrit Bharat Station, Amrit Bharat Train, Amrit Generation. So, चारों ओर सिर्फ अमृत ही अमृत है. जो लोग ये अमृत पी रहा है, उनका बात छोड़ दीजिए. जो लोग हलाहल पी रहे हैं, जो लोग हलाहल यानी कि जहर पी रहे हैं, उनके लिए ये बहुत सोच की बात है कि ये अमृत लोक में बात कर रहे हैं, ये अमृत लोक में जीवित है या दूसरा कोई परलोक में तो नहीं चले गए. अमृत लोक सुनते सुनते उनका परलोक का याद आ रहा है. सर, it is a make-believe situation. How it has been coined like Amrit Kal everywhere, every sphere of life of the society, I do not understand. Anyway, it's a prerogative of the government. At page 3 of the pointed booklet, it is said, quote, last year my government has given government jobs to lakhs of youth in mission mode, unquote. So it is not in the distant past we heard about that 2 crores of jobs will be given to jobless per year. And by this time, the number ought to have been 20 crores because this government has already spent 10 years in power. Now the question is, when it is said that lakhs of jobs, the natural question comes as how many lakhs? There is no mention about this. How many jobless were there? And out of how many jobless were given, how many lakhs of jobless were given jobs? And how many remaining? These are the pertinent questions which have not been addressed by the Honorable President, which has a speech which has been prepared by this government. So, should we take it as another Jumla? Sir, it is said in page 4 of this speech that government enacted important legislations with the cooperation of all parliamentarians, including that draconian law, Nyaya Sanghita, which according to me is Anyaya Sanghita. Anyway, but this claim that all parliamentarians supported the bills when it was introduced and discussed, this is not true. This is incorrect information. Why? And as a keen reader of history, it reminds me to a situation in the year 1933 when Hitler in Germany, he brought one enabling act which will enable his cabinet to legislate instead of the parliament, and for which no presidential assent will be required. And what happened? The law was passed. It is called enabling law. It was passed in Hitler's regime in Germany in 1933,
after sending 106 parliamentarians to concentration camp. Thereafter, the bill was passed. Here we have seen that after suspension of 146 parliamentarians, these bills were passed. And the number 146, suspension of 146 parliamentarians in Indian Parliament is the highest ever in the history of parliamentary democracy around the world so far. Therefore, the statement made in the Honorable President's speech, I should not say that it is far from truth, but it is incorrect and purposefully given by the government to create a confusion in the minds of the people. Sir, in page 6, paragraph 9 of the speech, Niti Aayog claimed that about 25 crore countrymen have been lifted out of poverty in the last 1 decade. That is during this Amrit Kal. My question is that out of how many poverty-ridden people 25 crore have been lifted out of poverty as claimed by Niti Aayog? What was the exact number of poverty-ridden people when they came to power in 2014? And out of which, when they say the 25 crore have been lifted out, how many remaining? These questions have not been addressed. Therefore, all these are half-truths. I'm sorry to say. In this way, a series of lofty claims have been made in this report card of the government to carry out disinformation campaign on the eve of the Lok Sabha election. Reality is altogether different, sir. Madam, I would like to refer to Article 39 of the Constitution, Clause B. It says categorically, it is under the directive principles of state policy. The state shall, in particular, direct its policy towards securing that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. And Clause C says, you are aware, Madam, very much. Clause C says that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment, unquote. Now, what is happening? What is the scenario of Indian economy? Inequality has gone to what extent? I may kindly be permitted to refer a few points from the Oxfam Report 2023, which was released in January this year, 15 January this year. The government does not accept that report, but we put very much reliance on this report because of the practical situation in the country. Number one, the richest 1% in India owns more than 40% of the country's total wealth. Number two, the bottom half of the population shares just 3% of the national wealth. Number three, Indian government recently cut taxes on corporation while introducing a centralized tax system, that is GST, that led to increased indirect taxation of households. A one-time 2% tax on billionaires' entire wealth would support to rupees 40,423 crore for malnourished individuals for the next 2 years, and you are giving concessions to the corporates. Next, female workers earned only 63 paisa for every 1 rupee a male worker earned.
Scheduled caste and rural workers earn significantly less than advantaged social groups. This is very much pertinent, madam. This point, billionaires in India witnessed a 121% surge in wealth since the pandemic began. Until November 2022, this is going on, the surge of their wealth. And during pandemic, it was 121% surge. One particular Indian billionaire, whose portfolio includes energy companies, has seen his wealth soar by 46% in 2022. 64% of the total GST came from the bottom 50% of the population in 21-22. Total number of billionaires in India increased from 102 in 2020 to 166 in 2022. India's 100 richest combined wealth reached 660 billion US dollar, that is in Indian currency 54.12 lakh crore. This is the economic inequality which must be resisted as per the dictum of the Constitution as enshrined in Article 39 B and C. In India, 7 TV channels reaching over 800 million people are owned by one particular billionaire. In India, a one-off tax on unrealized gains from 2017 till 2021 from just one billionaire would have raised 21.95 billion US dollar, enough to employ more than 5 million Indian primary school teachers for a year. Such a huge economic inequality, and we are chanting the mantra of Amrit Kal, Amrit Mahotsav, and Amrit, Amrit, Amrit. Sir, madam, forget about Oxfam report, because government does not believe in that report. But UNDP report in regard to Asia Pacific Human Development Report of 2024, released on 15th of January this year, what does it say? Only 3-4 bullet points. In India, income distribution has become more skewed, with the top 10% of the population getting 57% of national income, UNDP report. The top 1% get 22% of the national income, indicating one of the most unequal income distribution. Top 10% of the population control 65% of the nation's total wealth, highlighting significant wealth inequality. Growing evidence of a strong rise in wealth inequality, particularly in the post-COVID period. Finally, from UNDP report, women constitute only 23% of the labor force, and certain groups like informal workers and interstate migrants are at greater risk of falling back into poverty. My submission is that unless this huge inequality is removed on war footing, one cannot rule out the possibility of social unrest or upheaval. Now, the rural wage rates and inequality. Agricultural labor real wage rate increased by 4.6%. The real wage rates of non-agricultural and construction workers are lower at the end of the period, that is 2014 till 2022. Non-agricultural workers form the majority, and they are 68.9% in all agricultural laborers, are among the employed in rural India. For approximately 35% of India's workforce, real wages have not grown since 2014. For long 10 years in Amrit Kal, for 10 years of Amrit Kal, no rise in the real wages of 35% of India's workforce. Even in sectors with an increase in real wage rates, the growth rate is overshadowed
by the overall per capita income growth. So this mismatch must be looked into by the government. There is no murmur, no whisper about how this problem will be solved by the government in the Honorable President's speech. Now, after even the Labour Bureau report. What is Labour Bureau report? Labour Bureau report, it says, Labour Bureau report, 3 and 4, sorry, I have already mentioned about this workforce, so I am not going to repeat the Labour Bureau report. Now the question of federalism. The question of federalism. When this government came to power, everybody listened again and again, repeatedly, that this government believed in cooperative federalism. Cooperative federalism. Now it is not being mentioned because it has already become non-cooperative federalism. The glaring example of federalism is that every state which is ruled by opposition parties, their leaders are being hounded by the central agencies. Never in the history of India this happened. Double engine government we require. Therefore, the government, opposition ruled governments are to be dislodged by hook or crook. And this is going on every day. Even a Dalit chief minister has not been spared. The one nation, one election call comes from where? Is it in our constitution? No. Has it been recommended by the election commission? No. And surprisingly, the retired president of India has been appointed to head a committee, and that committee is now started discussing on war footing that it is to be implemented as soon as possible. Our Chief Minister, Ms. Mamata Banerjee, has already written to the committee, and she is also coming to attend the meeting tomorrow. That nothing will be accepted by our state at least on this issue. I sincerely believe the other opposition states, they will also not accept, because this is going to be a serious, there will be serious ramifications, serious consequences. It is draconian. Our constitutional scheme is altogether different. We are a parliamentary democracy, not a presidential form of government like USA. But this will open the door for presidential form of government, I apprehend. That is why I totally oppose to this idea of one nation, one election. There is a consistent tendency to erode the fiscal and economic policy space of space government. Resources transferred to states have been subject to regressive conditions, and a significant portion is kept out of the Finance Commission's ambit, allowing central control over their issue. Why this government is not following the recommendations of Sarkaria Commission? And what about the second commission, Unchi Commission, on center-state relations? In 2010, Justice Punchi Commission submitted its recommendation to the then government, and we are in 24. 14 years elapsed. No murmur about that recommendations. 14 years are not enough to finalize the recommendations of the center-state relations recommended by the Punchi Commission. Why the government is avoiding? Because the constitutional heads of the states, their heads will be rolled down if the Commission's recommendations are given effect to.
because the Punchi Commission has categorically stated, while appointing governors, the state governments must be consulted and their concurrence is must. They must not act as agents of the central government as it is happening now. Madam, rampant misuse of central agencies I have already mentioned. Now my driving points to my state about how this federalism is being respected. Only 1 or 2 points. 4 minutes. Center has resorted to fiscal terrorism in Bengal. Yes, Fiscal terrorism going on in our state by the center. How many central teams were sent to Bengal? More than 100. 156 teams were sent to Bengal to look into the implementation of the centrally sponsored schemes. And wherever the deficiencies or defects were found, each and every deficiency and defects were removed, intimated, even though in the entire country, West Bengal had been singled out and all dues to the extent of 1,16,000 crores, central government has stopped. It is economic blockade. They want to kill the poor people. Terrorism. It is fiscal terrorism. That is why. Because they thought that by suspending the release of the fund, it will have good effect for them in the ensuing election. No. People have understood what is what. Now, therefore, our Honorable Chief Minister on the other day, 3rd February, she announced the state government from its own fund will give the dues of the workers, 21 lakh workers who could not get the wages. They will be paid out of state funds. We are not depending upon the central funds. But we will definitely take out the issue to the people, and the people of Bengal will give a befitting reply for such fiscal anarchy. Yes. There are other points also, Manreka, but my time is limited. Almost only 2 minutes. Yes. So to conclude, I would like to respond in reference to paragraph 37 of the President's speech. I don't like to mention, because paucity of time, what he said there, but everybody knows that is the concluding paragraph. I would like to quote from Rabindranath Tagore, a few lines from his Bengali poem, written 123 years back. The name of the poem is Din Dan. Din means poor, Dan means gift. Quote, few lines. There is no God in that temple, said the saint. The king was enraged. No God? Oh, saint, aren't you speaking like an atheist? On that throne, studded with priceless gems, beams a golden idol, and yet you proclaim that it is empty? It is not empty. Rather, it is full of royal pride. You have bestowed yourself, O king, not the God of this world, remarked the saint. And it continued, in the very year in which 20 million of your subjects were struck by a terrible drought, the desperate masses without any food or shelter came begging at your door crying for help, only to be turned away. They were forced to take refuge in forest caves, camping under roadside foliages, derelict old temples, and in that very year, when you spent 2 million gold coins to build that grand temple of yours, that is the day God left that temple of yours and joined the poor. Your mundane temple is hollow. It is just a bubble of wealth and pride. The enraged king howled, oh, you sham cretin of a person,
leave my kingdom this instant. The saint replied very calmly, to the very place to which you have exiled the divine, vanish now the devout too. Thank you, madam. Before we go to the next speaker, honorable members, the discussion on motion of thanks on the President's address will continue after the introduction of the bills. We now take the bill, the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024. Shri Arjun Munda to move for leave to introduce the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024. महोदय, आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित किया जाए. We now take the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024. Shri Arjun Munda to move for leave to introduce the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2024. उड़ीसा राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. Shri Arjun Munda ji may please introduce the bill. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उड़ीसा राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित किया जाए. Yes. Another bill for introduction, Shri Ashwini Kumar Chaubeji to move for leave to introduce the Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024. माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 का एक और संशोधन करने के लिए एक विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. No, I did hear the ayes. I request the Honorable Minister to introduce the bill. माननीय सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं. Honorable members, we now resume the discussion on motion of thanks on the President's address. Shri Tiruchi Shivaji. I think you have 29 Thank you, Madam Vice Chairperson. At the outset, I would first thank the Honorable President for having pleased to deliver her address to both the Houses of Parliament.
and also for having read the document of the government without fracturing it, unlike some of those appointed by her in various states. This government is, ma'am, anti-federal, anti-secular, anti-poor, pro-rich. It's anti-women. It is anti-MSC, ME, anti-CPSUs, pro-corporates, anti-farmers and anti-labor, pro-center and anti-regional. See, why I am telling all these things, not it's an evasive accusation against the government or alleging them without any base. In the recent days, after this government has taken over power, there's a blatant attempt to undermine the regional parties and the local issues. There's a stepmotherly attitude we witness and we experience. Take, for example, the devolution of revenue shares. The Finance Commission, 14th Finance Commission recommended to 42%, whereas what we are getting is not that much. It was 34%, then 31.3%, and only now 25%. It was in 21-22, 1.70 lakh crore. Next year it came down to 1.40 lakh crore, and now it is 1.24 crore. Tamil Nadu is the largest contributor of direct taxes to this country, whereas for 1 rupee we pay to the union government, the Tamil Nadu government is getting 29 paise. Whereas the UP, if they pay 1 rupee, they get 2.73, 2 rupees and 73 paise. What is this disparity? Why this discrimination? You say the country is one. You say everything, all are equal. But why this sort of treatment? By way of this GST regime, the Tamil Nadu government has lost estimated to around 20,000 crore rupees. It was a hasty implementation of GST. We have experienced a lot. And other thing, legislations are not able to be carried over in the assemblies. The elected government, which is in the assembly, do know the needs of the people and they legislate laws. But the Raj Bhavan stand as a stumbling block, and many of the bills that have been passed in the assembly have not been accorded sanction or assent from the governors, and because of that, many state governments are limping, especially the opposition ruling parties. The opposition ruling parties, wherever which states or wherever they are ruling, they are being treated in a manner the central agencies enter in and arm twist the government as well as functioning of the governments. And moreover, very importantly, recently there was a very bad flood in Tamil Nadu, the torrential rains. Before that, there was a cyclone. Chennai and southern districts were affected too much. We demanded immediate for relief 5,000 crore. We were given only 450 crore, not even 10%. And later, overall estimate, say the defense minister came to the spot and he had an overall view of what happened there. And the Prime Minister was met by the Chief Minister of Tamil Nadu and he gave an estimate of 37,000 crore rupees demanding for immediate relief. Nothing happened. Then a delegation of all party members of parliament came and met the Home Minister, which delegation the Home Minister assured that it will be done. Nothing has been done. So even at the time of distress, they just witness how the states which are being ruled by opposition parties are suffering. This is not the way a union government has to treat a state government under a federal system. That is why I say it is anti-federal. It's not just an accusation against them, but it is the fact because of that. Take, for example, my neighboring state, the Andhra Pradesh. I have been hearing them for the past 10 years, cutting across all the political parties. After the Andhra Pradesh Reorganization Act in 2014, they are demanding for special status to Andhra Pradesh. Polavaram project, it is very much acquainted to us. Nothing has been
taken care of because it is not ruled by BJP. For 10 years they have crossed by. They have asked for a special status and are still demanding it. It has not been acceded to. So this is the way states are being treated by the union government. We say it is not fair. Why I say it is unsecular? I would like to remind about the Citizenship Amendment Act. That act was brought, of course, apparently it seemed that India is very genuine and very generous of accommodating those who have been persecuted in the neighboring countries by way of religion will be given citizenship. But that bill that later on which became act very clearly said 3 countries were selected: Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. And from there only 5 religions, selective. Hindus, Christians, Parsis, Sikhs and Buddhists will be accorded citizenship who have registered before 2014. Our question is, while you are so generous of giving citizenship to people who have been persecuted, why Muslims have been deleted in the list? When you have taken 3 countries, why have you not taken about another country which is a neighboring country, Sri Lanka? Sri Lanka, Tamils, 1.5 lakh Tamils are in India without citizenship. The torture they are undergoing because of lack of citizenship cannot be described, and we have represented many a time it has not been taken care of. So when I gave an amendment that religious as well as ethnic persecution, so also include Sri Lanka, include Muslim community, that amendment was defeated by this government. So also the triple talaq. When triple talaq was brought, they said it is in favor of Muslim women. Everyone said, oh, it could be. But actually it is to victimize Muslim men. It is a protective measure a government should take, not a punitive approach. And why I am telling that, I brought a private member resolution for legislation for the welfare of the widows. Ma'am, 4.5 crore widows are in India. And in Brindavan alone, 1.5 lakh widows are there. And those are 20 to 60 years age, nobody takes care of them. They are there begging, they are there pulling rickshaws, they are being exploited by some other people, and some NGOs are taking care. I brought a resolution. We need a legislation because government of Tamil Nadu has given so much of schemes for widows. For your kind information, I would like to remind the House also that resolution was defeated. When you say that you are fighting for women's cause, you say triple talaq is brought for the Muslim women, but it is not so. The undercurrent is to punish the Muslim men, whereas had you been the same intent, you would have supported the women's widows' welfare resolution also. So they take a double standard. So also women's reservation bill. They say we have fulfilled the long wish of political empowerment to women. When? After census, after delimitation, after reservation, it is far-fetched. It is like extending a carrot before a horse and making it to run. They give an impression to the women that the government has passed a women's reservation bill, but it is not so. May I suggest to the government, if at all you want to empower women, don't go for that. Again, I would like to cite my state as an example. We are giving 40% reservation to women in employment. Why don't you give that? My private member bill for that also is pending, which has not been taken into consideration. So it is anti-women, it is anti-secular, it is partisan towards some religious people. See, everyone should feel secured in this country. I have repeatedly said, when India partition took place, Muhammad Ali Jinnah said, all the Muslims come to my country, Pakistan, which will be for Muslims. The Islamists in this country said, yes, we are Muslims, but India is our country. And they stayed here and they sacrificed for the country. So many of them are in the military. So many have done in, take for example, Dr. Abdul Kalam. How many have done that? But why you should treat them in this manner is our simple question. Everyone should feel secure, but it is not so. We have to think about all these things. So when I say you are anti-secular, it is all with base and reasons.
When I say anti-women, it is also based on what has happened to women community by way of this government's approach. Again, I said it is anti-poor. My colleague, Mr. Sukhendu, quoted many things. The per capita income in India for a person compared to China is 1/4 of it. Whereas in population, China and India are one and the same. I would like to say another thing, very shocking. I am very unhappy to say about my country's situation here in the parliament, which will go across the world. But the government's handling of situations is not in the right manner. I have to tell that. It's our responsibility as a citizen, as a member of parliament, and as, of course, in the interest of the country. India ranks 139th place in the per capita income in the world. Hunger index. And in the G20 countries, you are so proud that you have been successful in conducting G20. The lowest per capita income among the G20 countries is India. But you are climbing high that you have conducted the G20 summit very successfully. 22 crore people are suffering from poverty. That also was mentioned. Even the President address said, Garibi Hato was once a slogan, but now we have uplifted 25 crore of people from poverty. Where comes? 22 crore people are still below poverty line. And what is the index? What is the parameter of below poverty line? For a rural person, for a rural family, it is 27 rupees per day, 816 rupees per month. For one who is in the urban, it is 33 rupees, 1,000 rupees per month. One can imagine how can a family survive with 1,000 rupees and 800. But the President address says, on behalf of the government, it says that, oh, we have uplifted poverty and people from poverty. And India ranks 5th in the global in economic power. Soon we will be in the 3rd place. All because of the corporates. You are anti-poor and you are pro-corporate. That is what we are telling. 10% of our population get 57% of the nation's income. 10% of the population enjoy 65% of nation's wealth, whereas only 3% of the nation's wealth is possessed by 50% of the population. Let them please explain to us that you have uplifted poverty, people from poverty line. This is the condition of the poor. The Manrega, earlier the number of people who were benefited was 4.14 crore. And now it has increased to 6.16 crore. After the COVID impact, how many things were affected? Have they been restored? Has it been brought to the position? No. The government was concentrating on other things. The oligopolistic conglomerates, some have a control over all the substantial parts of economy and even policy matters. I don't want to tell who it is. Everyone knows where Parliament whole session was taken away by that. Some people who own everything controls the entire economy of the country. It is all private business people. So also the MSME, very important sector. A question was raised in the morning. It provides 20 crore employment to 20 crore people. Next to agriculture sector, MSME is the only sector which provides more employment. It contribution to GDP is 29%. And in the exports, its parts is 45%. I am the chairman of the Committee on Industry. I know very well how we are patronizing. Ma'am, you know very well, being a part of it. So that MSME is not patronized to the extent. How many units fell sick and went out of it? How many people came to the streets? One MSME unit gives employment to 5 persons, but it is not taken care of. Let me tell, 2,300, just 2,300 individual enterprises, companies, their loan default is 2 lakh crore. 2,300 business people's loan amounts to 2 lakh crore people. And Indian banks have written off 5.3 lakh crore to corporates only. Whereas the NPA of the MSME,
comparatively. I said 2,300 equal to 2 lakh crore. The numbers are very big. 18.65 lakh units of MSME. Total MSME units in our country are around 6 crore. Whereas the NPA are only 18.6, maybe 19 lakh units. But the total amount is just 16,341. This 18 lakh or 19 lakh units employ 1 crore people, and their loans to the bank's NPA that has not been repaid is only 16,000 crore, and whereas only 2,300 business people have got 2 lakh crore not repaid, and so also their loans have been waived off for 5.3 lakh crore. It's all alarming. What is happening? This government says maximum governance, minimum government. But minimum achievement, more trumpeting. They have spent 4,880 crore towards advertisement. That is public exchequer money. What about agriculture? One can recall all my colleagues in the House, how the farm bills were passed in the House. You can be proud to say that we have passed so many legislations. As many other members have pointed out, after having sent out to the opposition parties who will raise voice against or point out the errors of the government, they were all suspended, sent out, and you have passed legislations. So also scrutiny of the bills are also not like that. In 2014, what they point often, the UPA government, 71 bills were referred to Parliament Committee scrutiny. But now it is only 17%. Why? 71% and now 17% means they are not depending upon the scrutiny. In the House, it will be 2 hours, it will be 1 hour, it will be 3 hours, members' time will be 3 minutes, 2 minutes, whereas in the committee, it will be an elaborate debate. The stakeholders can appear. The government is bound to come and reply and make alterations, and the recommendations will be considered seriously, whereas all the parliament committees have become insignificant. And this is the way they are. Budget for agriculture coming down year by year. Before, budget for other things have been increasing. Home Department, defense, okay, that's all okay. But why agriculture budget is coming down? Agriculture is the spinal cord of India. I say, one can call the 2008 economic recession, when the whole world was suffering under it. It emerged from the Europe and affected the whole of the world, but not India, only because of the public sector units and the agricultural sector. But you are killing both. The farm bills were brought with what intent? To encourage some corporates. And it was passed when the house was not in order. And when the whole country, the farmers came to the road and agitated, it was taken aback. And so also the budget is coming down. And the exports of farm produce, banned wheat in May 2022, broken rice in September 22, and onion in December 23. Farmers are not encouraged. Their produce are not allowed to export. They are not patronized. Fertilizers price is going on, increasing, and input costs are increasing, whereas the price of the agriculture produce are not being proportionate to the expenses. The government promised that we will double the income of. Nothing happened. Again, we would like to say, like how you said, 2 crore employment will be generated. So far, only 7 lakh employment has been generated. But the need is 7 crore. And you said 15,000 rupees will be deposited in everybody's account after 15 lakh, sorry. I am coming. 15 lakh rupees will be deposited in every person's account after unearthing the black money. And someone said, no, we didn't say like this. If at all we unearth the black money, that would be equivalent to 15 lakh rupees in every account. Have you unearthed? Have you deposited? No. So all are election jumla, as they themselves have said. So the farm bill was brought in that manner.
The Article 370's abrogation happened in that disorderly manner. Business are being not conducted in the manner it should be. So, many silence. When Manipur, everybody knows, northeast states, which you say that you are taking too much of care. Manipur, what happened? The whole world was watching. The clash that happened between two groups, it totally stagnated everything in the country. How women was treated, everybody knew. What we demanded, just an explanation from the government. What for is a parliament? It's a debating forum. We have to debate, we have to deliberate, we have to decide. The government is accountable to the parliament. The parliament is accountable to the people. When the members of parliament come to the house and demand an explanation from the government, there was only silence. When there was a no confidence motion in the Lok Sabha, even then explanation was not given. So Manipur, nothing has been resolved so far, no explanation from the side of the government. 2 persons intruded into the parliament despite the security we have here. We were not allowed to discuss about it. No explanation from the government. We asked nothing out of the way. What is happening in the country, we want to know, and the government is accountable to the parliament. You come here and explain to the parliament, which will be told to the people. But it is not so. So I considering my time, and I have to give way to my colleague, my sister, to some areas also for her to deal with. Because this government has spoiled this country in many areas, but something has to be left to her. And very importantly, I have to tell, as I said, finance minister has come, kindly take care of the states about the devolution of funds which are reducing every year by year, which we are very much concerned about. And so also take care of the Tamil Nadu government's demand that flood relief and cyclone fund we have been asking for, but we have not been accorded so far. And right thing, at least he has come. Take care of the states which are being ruled by opposition parties also. And ma'am, to conclude, I would say, Mahatma Gandhi envisaged a village India. Pandit Nehru built a modern India. Lal Bahadur Shastri aspired for a Kisan India. V.P. Singh created a social justice India. Manmohan Singh, a globalized India. Honorable Narendra Modi ji is taking defederalized India. We are very sorry to all these things. 10 years have been given to you. In these 10 years, what is the net result? The progress report shows more poverty, more poor people, more unemployment. Small-scale industries are being crushed. Many corporates are having their hands upon them. MSME has to be taken care of. All these things, when we say, we can just remind them one thing, remind of the IPC World Cup series which happened. 10 matches, Indian cricket team won like anything, and a much hype was made for the final match. Even the Prime Minister went and everyone was there. Whole nation was proud and nobody looked after any other thing. The team which won 10 matches lost miserably in the final. So also you might have secured 2 Lok Sabha elections, you have won. You might have won the by-elections, but 2024 elections will be the IPC World Cup series to Indian cricket team will be to the present one. I'm not IPL, sorry. Thanks. Thank you very much. IPL. And again I say, not because of just we are not here and they are there, not able to tolerate someone who is in power. We have witnessed, we have experienced, we have suffered. Uphold federalism. We have to be secularist country, and states have to be protected, and youth have to be taken care of, labor have to be taken care of. Anti-labor policy should not be, we should be India in its own form. Since you have not done it, the 2024 elections, the India Alliance will win and bring back India to its original place. Thank you very much. Thank you. Thank you, Tiruchuji. Shri Sandeep Kumar Pathak.
धन्यवाद ऑनरेबल चेयर मैडम। मुझे आज महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव में बोलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं भाग्यशाली हूँ। आप सब का भी, मेरी पार्टी की तरफ से भी और उन सभी जनों का जिनका मेरे ऊपर आशीर्वाद है। ऑनरेबल चेयर मैडम, आप अगर अभिभाषण को पढ़ेंगे तो पहले पन्ने के पहले ग्राफ में ही 3 महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। सबसे पहला है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके बाद लिखा गया है अमृतकाल, और फिर तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि बिलीवर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। मैं इन तीनों बातों को आधार बनाकर अपनी बात को आपके सामने और देश के सामने रखना चाहूँगा। ऑनरेबल चेयर मैडम, हम सब राजनीति में देश को आगे बढ़ाने के लिए और इस देश को श्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य से ही आए। हम सारे अपने अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्र में थे। हमने जीवन में सब कुछ छोड़कर राजनीति में आने का कारण ही यही था कि हम इस राष्ट्र को श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस सदन में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति या किसी भी सदस्य और उस पूरे देश में किसी भी व्यक्ति के Congress party. Sir, Congress party, I have no hesitation to say the Congress party is the real culprit when it comes to the Andhra Pradesh, when it comes to the damaging the interest of Andhra Pradesh. Sir, mere pointing the finger will not change the reality. They have to realize that. Sir, YSRCP has always been at the forefront for demanding the special category status even after BJP has come to power. Sir, our Honorable Chief Minister, Sri Jagan Mohan Reddy Garu, has met Honorable Prime Minister more than 8 times, Honorable Home Minister more than 12 times, and asked for special category status. I will tell you, I will address that. See, when BJP has got 303 seats in 2019 elections, where was the necessity for them to, when you have failed to do so, when you had an opportunity to do so, when you had an opportunity to grant the special category status, you have not done that. When BJP got 303 seats in Lok Sabha in 2019 elections, and where was the necessity for them? Ultimately, eventually, who is at the loss? It is the state of Andhra Pradesh, it is the people of Andhra Pradesh whose interests have been damaged. Sir, I am telling you now, in this platform, last 2019 elections, BJP got 300 and odd seats, and now cephologists say that
BJP is going to get more than 350. Where is the Congress party? BJP will never heed to any other political party if they get 350 in the ensuing next elections. Congress is going to get less than 40. And their own alliance partner says that they will get only less than 40. It is not me. It is on record. You verify the record. Yes, I read you address to chair. Please. Sir, MPs, member of parliaments of our own party, YSR Congress party, not only our chief minister has met the honorable prime minister and also honorable home minister, our own MPs on countless times raised this issue, including myself, on the floor of this house as well as on the floor of the Lok Sabha. But we couldn't do anything. BJP has never heeded our request, and we have agitated, we have requested them, we have begged them, we have pleaded with them. Nothing. There was no use. When they have not done that, when they had an opportunity, BJP also is not doing it. When they are in a position to do it, eventually Andhra Pradesh is the victim. Sir, by making hollow promises in the parliament, Congress had made mockery of our parliamentary democracy. This is what the conclusion is, sir. Sir, the next point. Sir, another 15 minutes. Yes, you have time. I have an opportunity to criticize them another 15 minutes. Please. Sir, at the time of bifurcation, the Congress government has been in power for 10 years. I've told you, sir, 2004 to 2014. And they have done the damage. See, sir, in fact, I draw your kind attention to the manifesto of Congress party, which they have released in 2004. In 2004, in their manifesto, they have promised separate Telangana. Suresh done. They have promised in 2004, they have promised separate Telangana in their manifesto. Please. So, it was the Congress manifesto which has stated separate Telangana. Sir, they had full 10 years, the whole decade to create Telangana in a rational, they could have done it in a more rational and scientific manner. The bifurcation could have been more scientific and more rational. They have not done that. Why they have not done that? They wanted to take only electoral benefit. Their real intention is not to benefit the people of Andhra Pradesh or not to benefit the people of Telangana. It is only for their electoral benefits. They have done it and they are suffering, sir. Sir, they could have constituted, I'm telling you, you could have constituted second state reorganization committee for this purpose. They have not done that for reorganization to ensure that bifurcation is done in a more planned manner. They have not done that. Sir, the Congress party has been sleeping for 1 decade, one full 10 years. Why did Congress party choose a shortcut method for bifurcation? Shortcut method. You wanted for everything you wanted shortcut method, sir. Just in 10 days before the notification of 2014 elections, they have taken the shortcut method and they have completed the process. This is what the Congress party is. Sir, it is because of Congress. The bifurcation was never about the welfare of the two successor states. It is not their concern. The welfare of the people is not their concern. The Congress party has done is just a sheer electoral opportunism. There is nothing else, sir. Sir, they knew. Sir, in fact, please go back to the electoral records of the composite Andhra Pradesh, sir. During 2004 and also during 2000 elections prior to 2014, during UPA 1 and UPA 2, composite Andhra Pradesh has contributed maximum number of MPs. It is because of composite Andhra Pradesh and contribution from from composite Andhra Pradesh, they have come to power at the center. And they have, in the other states, they have got nothing. They have almost got out of 42, they got almost about 39 from the composite Andhra Pradesh. 37,
UPA formation, UPA 1, they got 37, and UPA 2, they got 33. That is the contribution. Because of AP, composite AP, they have come to power in UPA 1 as well as UPA 2. However, in 2014, sir, since their chances, they have realized, they have completely misruled the state, composite state of Andhra Pradesh. And they have realized that they are not going to come to power. At least they thought by bifurcating the state, they could come to power in Telangana and at least leaving behind Andhra Pradesh. That was their idea, and the bifurcation of state to generate favorable electoral result in Telangana. The people of Telangana also have taught a lesson to them. That's a different issue, sir. Sir, the Congress was the main villain. They are the villains. Congress was the main villain in this entire episode of special category status and also bifurcation. They took the division of the state and the people merely to serve their own political motives, merely to serve their own ulterior motives, merely with an ambition to come to power in Telangana. Sir, I would like to say one thing, sir. The non-Congress governments have created, whenever they have created new states, it is only Congress specific, sir. Whenever new states have been created by the non-Congress state governments, like Chhattisgarh, Jharkhand, Uttarakhand, all these states have been bifurcated and carved out from the main other states in a most peaceful and scientific manner, which they have not done. They couldn't do it. Why? Because of their ulterior motives. Then evil intentions to stay back in power by whatever means and bounds. Sir, Congress party has failed in regard to two aspects, sir. They have failed to arrive at the consensus for AP Reorganization Act at the state level. At the state level, they have failed. They were in the power. They were ruling the state. Congress party was ruling the Andhra Pradesh. And they have failed to create consensus. And your own government and your chief minister, the then chief minister, Mr. Kiran Kumar Reddy, the then chief minister, Mr. Kiran Kumar Reddy, you have failed to arrive at consensus. You have failed to create consensus within the state. Sir, the second thing, sir. They have failed to get their own party people to unanimously agree for the bill. Sir, they have, in fact, their own Congress members have opposed the bill. Shame to the Congress party. Their own members on the floor of this house as well as in the house of the Lok Sabha, they have opposed the bill tooth and nail. They have failed to arrive at the consensus. They have failed to unanimously to bring unanimous consensus, agree among the members to agree on the bill, sir. Sir, these points are very important, sir. The last points about the Congress party, and I pray God that the Congress party should be punished for the misrule, injustice what they have done to the state of Andhra Pradesh, sir. Sir, in the light of all these betrayals, by the Congress party, the people of AP have now learnt never to trust spineless Congress party. I have no hesitation to call them as spineless Congress party. And I'll put a step forward, sir, and if you permit me, I call them as Dhokebaz party. Permit within the parliamentary party. Yes, please. You are playing politics, family politics. See, family issue. Don't bring family issues into the political arena. Vijay Sai Reddy ji, address to the chair. That is the reason why. Please, seat per baith karna bole. See, this is the reason why. That is the reason why your dirty tactics and dirty planning. Vijay Sai Reddy ji,
keep in mind parliamentary words. And Parliamentary words. intervening in the family affairs. Please. That is the reason why people have taught a lesson to you. That is, sir, that is the reason. Sir, important, sir. सीट पर बैठ करना बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, सिर्फ बीएसआई रेड्डी जी की बात रिकॉर्ड पे जा रही है. Please. I am not yielding, madam. Please. Sir, this is the reason why. This is the reason why the vote share of Dhokebaz party in Andhra Pradesh in 2019 election was less than Nota. See the percentage what they have got in Andhra Pradesh. Percentage of votes polled to the Congress party in 2019 elections in Andhra Pradesh by Congress party is less than Nota votes. Shame, shame. The Congress party, which has ruled the state, which has ruled the country for so many decades, has got less number of votes they have polled when compared to the even less than Nota votes, sir. Sir, even at the national level. So leave about Andhra Pradesh. It is only one state. I'll come to the national level. Sir, at the national level, the downfall of Congress party is very clear. Sir, very visible. Sir, in 2014 election, 2014 elections, Congress party has won 44 seats with a vote share of 19.31%. 19.31%, they have won 44 seats. This is the worst ever performance of the Congress party, Dhokebaz party, in the general elections. Sir, in 2000, ये सारे शब्द parliamentary हैं नहीं, it will be examined. Sir, please. Sir, in 2019 elections, 5 more minutes are there, 4 more minutes are there. 2019 elections, Congress party has won 52 seats. From 44, they have slightly gone up to 2052, 44 to 52, with a vote share of 19.46%. 19.46%. Sir, even their own allies, India, they call it India, INDIA. Their own. Please India. Speak to the chair. Even their own allies of Congress party are saying that Congress will not even get 40 seats in 2024. The next elections, which are going to be held in April 2024. Sir, last year, the cephalogist, I'm not an astrologer. Manya V. Vijay Sai Reddy ji. Last year, their beloved leader, Rahul Gandhi ji, lost in Amedi. This time, he will lose from wherever he contests. Wherever he contests, Rahul Gandhi ji will be losing. He will not win. He will not be able to become a parliamentarian. Please. Sir, whether it is Andhra, Kerala or anywhere in the country, let him contest. He will not be able to win. But in 2029, sir, madam, please, India, very important for you, very important. In 2029, sir, in 2029, India will be Congress Mukt Bharat. Congress Mukt Bharat. That is the status. The status of Congress party will change from grand old party to grand extinct party. Grand old party will become grand extinct party and the Congress party will not be there. And 2029 also I'll be here. I'll be here and I'll see Congress party is extincting, sir. Sir, conclusion, sir. And 2 more minutes are there. Sir, in this 77 years of independence, 77 years of independence, Congress has been in power for more than 50 years. Out of 77, more than 50. And India has grown only in the remaining 27 years, not in the 50 years. Only in the remaining 20 years, India has grown. The development, what we are able to see, what we are able to achieve, it is not during their 50 years of rule, it is only in the remaining 27 years of rule, sir. India's growth has not been because of the Congress party, but despite it, sir, very important, madam, whenever,
And whenever Congress party has been in power, India has prolonged period of backwardness. Whenever these 50 years, whenever they are in power, and we have seen the prolonged backwardness. Sir, very important, sir. Very important. This slogan has to be remembered by the Congress party, and they have to put it on their party walls on the party, sir, in the party. There is no doubt in anyone's mind that India grows only when Congress sleeps. India grows only when Congress sleeps. I am repeating it, sir. India grows only when Congress sleeps. Sir, the people of Andhra Pradesh, once again I am telling, will never forgive the Congress party. The Congress party has gone into the history in Andhra Pradesh, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you. Dr. Sudhanshu Trivedi. माननीय सभापति महोदय, आज महामहिम राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण पर जब हम उसका समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं तो एक अभूतपूर्व और अलग अनुभूति होती है, क्योंकि यह इस नए संसद भवन में राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण है। यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव पूर्ण होने के बाद राष्ट्रपति का पहला अभिभाषण है और गणतंत्र का अमृत महोत्सव प्रारंभ होने के बाद का पहला अभिभाषण है। और अधिक सुखद संयोग यह है कि यह उस संसद भवन के नए परिसर में हो रहा है जिसका श्री गणेश चतुर्थी को हुआ था और जिसमें पहला बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था और वहां पर देश की पहली महिला अनुसूचित जनजाति के वर्ग से आने वाली महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा इस अभिभाषण को प्रस्तुत करना और भी सुंदर सुखद संयोग बनाता है। और अधिक संयोग बेहतर इसलिए हो जाता है कि जब यह संसद भवन में प्रारंभ हुआ उससे पहले भारत चांद के अछूते कोने को छूने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ति रख दिया था, अर्थात स्त्री शक्ति का उद्भव भारत में वनवासी क्षेत्रों से लेकर विधानसभा और संसद से लेकर चंद्रमा की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का यह सुखद संयोग बना, जो मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल में भारत की उभरती हुई और आकाश छूती हुई एक नई शक्ति का प्रतीक। परंतु यह अमृत काल आया है तो यह आत्मसम्मान का एक नया स्वरूप भी लाया है। अब किंग जॉर्ज की जगह इंडिया गेट के सर्किल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है। एक नहीं, सभी प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय है। साहिबजादों की स्मृति में, जिसका उल्लेख किया है महामहिम राष्ट्रपति जी ने, वीर बाल दिवस भी है। बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन के ऊपर जनजातीय गौरव दिवस भी हुआ है, संविधान दिवस भी है, विभाजन विभीषिका दिवस भी है। अर्थात भारत की समस्त स्थितियों को संवैधानिक स्थिति देकर यह सुखद संयोग आया है। देश की अर्थव्यवस्था आज तेजी से बढ़ रही है। G20 में हम सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। 5G रोल आउट करने में हम पहले देश बन गए हैं और ब्रिटिश काल का किंग्सवे कांग्रेस के शासनकाल में राजपथ से होते हुए अब कर्तव्य पथ हो गया है। अब रेस कोर्स रोड लोक कल्याण मार्ग हो गया है। इंडियन पैनल कोड भारतीय न्याय संहिता हो गई है और मुगल गार्डन भी अब अमृत उद्यान हो गया है। और इस बात की स्वीकारोक्ति सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया कर रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ बॉर्ज ब्रेंडे ने कहा है कि इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विद पीस एंड नो कॉन्फ्लिक्ट। इन्वेस्टमेंट इन R&D and infrastructure is going in such a way that can make India a $10 trillion economy in a decade. ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ कहते हैं। और बिल गेट्स ने यह कहा है कि जो इंडिया ने डिजिटल सिस्टम स्थापित किया है वो पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। चैथम हाउस थिंक टैंक ने एक आर्टिकल में कहा है कि G20 शोकेसेस द पावर ऑफ न्यू इमर्जिंग इंडिया। और तो और हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी प्रतिस्पर्धी देश माने जाने वाले चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने भी मान लिया आखिर में 2 जनवरी 2024 को अपने एक आर्टिकल में यह स्वीकार कर लिया कि मोदी जी के आने के बाद भारत में अर्थव्यवस्था और विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ा है।
जितनी भी रेटिंग वाली एजेंसीज हैं, फिच, मूडी, IMF, वर्ल्ड बैंक, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, ये सब 6.7 से लेके 7.8% तक भारत को बढ़ता हुआ ग्रोथ रेट दिखा रही है। इन सब के अनुसार भारत इस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रमुख इकोनॉमीज में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, अब तो इस नए संसद भवन के ऊपर जो भारत के राजकीय चिन्ह के शेर हैं, वो भी नई आभा से दिखाई लगने लगे हैं, क्योंकि हमारे बहुत से विरोधी कोर्ट चले गए थे कि शेर कुछ ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं, क्योंकि इनको चाहिए था कि शेर भी बिल्ली जैसे चाहिए थे। परंतु अब संसद भवन में एक ऐसा शेर बैठा है जिसकी वजह से अब किसी की भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं है। जो इस भाव में विश्वास करते हैं, न विक्रमार्जितो सिंहस्य क्रियते मृगा विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। तो भारत की जो मृगेंद्रता है वो उठकर सामने आ रही है। परंतु मैं माननीय सभापति जी कहना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। 16 मई 2014 को जिस दिन इस देश में सरकार बदली, उस दिन जनादेश जो मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत में हमें मिला, वो सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं था, विचार बदलने के लिए था और व्यवस्था बदलने के लिए था। और इसके लिए मैं कोट करना चाहूंगा लंदन का संडे गार्डियन, जिन्होंने हम पे हुकूमत की थी, उनके अखबार को कोट करता हूं। वो 18 मई 2014 को लिखता है अपने एडिटोरियल में, इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। और आगे वो लिखता है 16 मई 2014, यानी वो दिन जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, शुड बी नोन इन इंडियन हिस्ट्री एज द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। और आगे वो कहता है कि उसका कारण यह है कि आजादी के बाद लंबे समय तक उन विचारों का शासन रहा जिनके ऊपर ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता की विरासत का प्रभाव था, परंतु पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में पूर्ण सत्ता आई है। अटल जी के जमाने में पूर्ण सत्ता नहीं थी, हमारे हाथ में पूर्ण सत्ता आई है, जो अपने इंसेप्शन और इंस्पिरेशन दोनों में पूर्णता भारतीय है और ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई उसका मतलब नहीं है। और यह बदलाव वहां पे दिखा जब नीति आयोग बना। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने अपनी पहली जो बैठक की, उसमें कहा कि बहुत दिन भारत विदेश से आयातित आर्थिक विकास के मॉडल्स को लेता रहा। कभी हम रूस की कॉपी बनते रहे नेहरूवियन सोशलिज्म मॉडल में, तो कभी अमेरिका की कॉपी बने। मगर पहली बार नीति आयोग ने अपने रेजोल्यूशन में कहा कि नाउ वी विल नॉट बी बोरोइंग अपॉन एनी मॉडल फ्रॉम आउटसाइड, वी विल सर्च फ्रॉम ओरिजिनल भारतीय मॉडल। और आपने देखा उसके बाद उसकी शुरुआत इस प्रकार से हुई। इस देश में सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने क्या सोचा, वो अंत्योदय के विचार से प्रेरित थे। सभापति महोदय, जब हम लोग सत्ता में नहीं थे तो हम लोग कहते थे, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों में न पहुंचा। तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले यह इंश्योर किया जन धन योजना लाके कि गरीबों के पास अकाउंट होने चाहिए, और आज 54 करोड़ अकाउंट हैं, तो थके पंछियों के परों में सीधा वह रक्त पहुंचे जिसमें ना कोई कट हो ना किसी अन्य प्रकार की चीज। फिर चाहे 11 करोड़ लोगों को शौचालय देना हो, 4 करोड़ गरीब लोगों को आवास देना हो। और इसके द्वारा बढ़ते हुए हमारे कई विरोधी लोग कहते हैं कि साहब रोजगार और व्यवसाय में स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं कि 2014 में EPFO एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट, यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाता, कोई कर्मचारी बनेगा तभी अपना भविष्य निधि खाता बनवाएगा, क्योंकि वो भी पैसा डालेगा और उसका एम्प्लॉयर भी पैसा डालेगा। 2014 में 11 करोड़ थे, आज 27 करोड़ है। तो इसका मतलब 16 करोड़ लोग ऐसे हुए जिनके की खाते इस दरमियान बने, तो उसमें एम्प्लॉयर भी है एम्प्लॉय भी है। इसका मतलब रोजगार के सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्थिति आने वाले टाइम में आई। और हमारे तिरुचि शिवाजी कई बार कह रहे थे डेट के बारे में, तो मैं बताना चाहता हूं भारत दुनिया की समस्त अर्थव्यवस्थाओं में डेट टू GDP रेशियो में सबसे बेहतर स्थिति में है। आप चाइना, अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, किसी से भी तुलना कर लीजिए, हम डेट टू GDP रेशियो में सबसे बेहतर स्थिति में है। पर्सनल डेट में हम सबसे बेहतर स्थिति में है। 73% लोग ऐसे हैं भारत में जिन्होंने कोई पर्सनल डेट नहीं ले रखा है। तो इसीलिए IMF ने हमारी अर्थव्यवस्था की वो तारीफ भी की है। परंतु ये सारा आर्थिक विकास सभापति महोदय तब तक बेमानी होता है जब तक उस विकास के साथ राष्ट्र के आत्मगौरव का भाव भी उसमें ना हो, क्योंकि आप विकसित होकर भी विश्व के सामने अपनी क्या तस्वीर रखेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण एक और दृष्टि से महत्वपूर्ण था।
सभापति महोदय, ये 5 साल के बाद आने वाली सरकार का, जो दोबारा भी आने वाली है, सिर्फ 5 साल के बाद आने वाली सरकार का अभिभाषण नहीं था, उस कालखंड का अभिभाषण नहीं था, 500 साल के बाद आने वाले भगवान राम के आगमन के उस अलौकिक अनुभूति के कालखंड का भी था। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, देखिए, इस देश में भगवान राम, उनके जीवन ने इस राष्ट्र और समाज को जो प्रेरित किया, वो राम मंदिर के समय में किस रूप में हुआ, मैं बताना चाहता हूं। अगर भगवान राम का जन्म केवल इसलिए हुआ था कि रावण का वध करना था, तो अयोध्या के राजा के रूप में अयोध्या की सेना लेके जाते, रावण को मार देते, परंतु उससे धर्म नहीं स्थापित होता। इसलिए पहले राजा राम को वनवासी राम बनना था, उसके बाद निषाद राज का सम्मान, उसके बाद माता शबरी का सम्मान, उसके बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक, फिर बानर, रीछ, भालू अर्थात समाज के उन दूर के कोनों में खड़े हुए लोग जहां तक किसी की दृष्टि भी नहीं जाती थी, सबको संगठित किया और संगठित करके तब जाकर उस समय की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को उन्होंने परास्त किया। अर्थात समाज के हर वर्ग को सम्मान स्थान देकर तब जाकर राम का राज्याभिषेक हुआ था। और आज आप देखिए, चाहे 4 करोड़ गरीबों को आवास मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है और 54 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिले हैं, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में कवर मिला है, वो तो है, परंतु ये भी एक सुखद संयोग देखिए जो लोग हमसे कहने का प्रयास करते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास जो 9 नवंबर 1989 को हुआ था, उसकी पहली ईंट जो पूरे शास्त्रीय विधान से हुआ था, जिसको सम्रांगण सूत्रधार कहते हैं उस ग्रंथ के अनुसार, पर पहली ईंट बिहार के कामेश्वर चौपाल ने रखी थी, जो आप लोगों के अनुसार सो कॉल्ड लोअर कास्ट में आते हैं। हम किसी को हायर और लोअर कास्ट नहीं मानते। और फिर संयोग देखिए, जब जजमेंट आता है 2019 में, तो उस समय हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद थे, जो अनुसूचित जाति समाज से आते थे। और आज जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है, तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं, और उस प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य जजमान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। मुझे लगता है जो राम के काल में हुआ था, सबको सम्मान, सबको स्थान, सबको सत्ता में स्थान, वही राम मंदिर के काल में भी हो रहा है। परंतु एक फैक्ट मैं और यहां पे कहना चाहता हूं, कई बार हम लोग उस समय छात्र जीवन में थे और ये कहा जाता था कि साहब ये मंडल के जवाब में कमंडल आया था। तो मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूं, ये पूरी तरीके से भ्रांति है। जो उस समय वीपी सिंह की सरकार मंडल लेके आई थी, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं था। हमारा आंदोलन 1984 से चल रहा था, 86 में ताला खुल गया था, 9 नवंबर 89 को शिलान्यास हो गया था। आज मैं सारे प्रबुद्ध लोगों से कहना चाहता हूं, मंडल कमीशन किस दिन लागू हुआ? 7 अगस्त 1990, सिर्फ 8 दिन बाद 15 अगस्त था। इतना बड़ा निर्णय जो उस सरकार ने आकर 8 महीने तक नहीं लिया, जो 8 घंटे में होने वाला निर्णय था, क्यों 15 अगस्त को नहीं हो सकता था? मैं बताता हूं उसका कारण बहुत स्पष्ट रूप से के राजा कुरुप्पु स्वामी की किताब में श्री स्वर्गीय शरद यादव जी ने लिखा कि वीपी सिंह से उनकी बात हुई और वीपी सिंह ने कहा कि मैं 15 अगस्त को इसको ऐतिहासिक अनाउंस करना चाहता हूं, मगर क्या करें, 9 अगस्त को देवीलाल जी की रैली थी और उन्हें इस बात का डर था कि देवीलाल जी की रैली के बाद जनता दल में विभाजन न हो जाए, बहुत से नेता न चले जाएं। उन्हें इस बात का डर था कि शरद यादव जी भी चले जाएंगे। उस समय कृषक वर्ग में बहुत सी ऐसी जातियां थी जो आज ओबीसी में है, उस समय नहीं थी। तो देवीलाल जी की रैली 9 अगस्त को थी, इसलिए 7 अगस्त को करना पड़ा। अर्थात उनका मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय, समाज के वर्गों के लिए उत्थान नहीं था, अपनी पार्टी के अंदरूनी समीकरण और उस राजनीति को साधना था। क्योंकि उद्देश्य पवित्र नहीं था, इसलिए न वो पार्टी बची, न उन नेता को सम्मान मिला। जबकि इसके ठीक विपरीत अगर देखें तो हमने ईमानदारी से उस वर्ग के सभी नेताओं को, जैसे श्री कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी, विनय कटियार जी, नरेंद्र मोदी जी, ये सब तो मंडल के राह से पहले ही के दौर में आ गए थे। और उसके बाद अगर आज हम देखें तो जो लोग आज हमसे कहते हैं पिछड़े वर्ग की बात, तो मैं कहना चाहता हूं कि हिंदी पट्टी में हमने 5 मुख्यमंत्री बनाए। कल्याण सिंह जी मध्य प्रदेश में, उमा भारती जी, बाबूलाल गौड़ जी, शिवराज सिंह चौहान जी, मोहन यादव जी। और हमने 8 डिप्टी सीएम बनाए। केशव मौर्य जी उत्तर प्रदेश में, सुशील मोदी जी यहाँ सदन में हैं, तारकेश्वर जी, रेणुका देवी जी, और हमने अभी अरुण साव जी छत्तीसगढ़ में,
सम्राट चौधरी जी बिहार में 8 और 5 13, और यदि प्रधानमंत्री जी को मिला लें तो 14। उस वर्ग के 14 लोग हमने बनाए, इसमें 11 लोग अलग अलग जातियों के हैं। ये होता है सबका साथ सबका विकास। और जो लोग आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अपने परिवार के अलावा एक योग्य व्यक्ति उन्हें नहीं मिलता है। जिस दिन सत्ता देने की बात आती है तो वर्ग तो छोड़िए, अपनी जाति में भी एक योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है। केवल अपने परिवार को सब कुछ चाहिए, यानी जाति का चूरन देना है, परिवार को संपूर्ण सत्ता पूरन लेना है। ये उनका उद्देश्य, और हमारी सोच इस मामले में बिल्कुल अलग रहती थी। अब यहां मैं एक और बात कहना चाहूंगा। राम मंदिर के उद्घाटन के समय एक और बात कही गई। हमारे बहुत से लोग कहते हैं इसमें सीता जी का नाम नहीं लिया गया। भाई मैं बताना चाहता हूं, अरे आप लोग थोड़ा सा सहज बुद्धि का प्रयोग करिए। ये तो राम जन्मभूमि है, ये तो रामलला है। विराजमान विवाह 5 वर्ष के हैं। जहां राजा राम होंगे तो वहां सीता भी आएंगी। अभी तो रामलला ही है, तो जय श्री राम ही होगा। और दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता भी होती है जब वो ये बात कहते हैं कि सीता जी का नाम होना चाहिए, तो मुझे ध्यान आता है कि दुनिया में कोई दूसरी संस्कृति नहीं है जो ईश्वर में स्त्री तत्व को स्थान देती हो। सिर्फ हमारी संस्कृति है। हम सीताराम भी कहते हैं, राधे श्याम भी कहते हैं, लक्ष्मी नारायण भी कहते हैं, गौरी शंकर भी कहते हैं। और जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो हम दोनों को याद करते थे। सभापति जी, मैं बालक के रूप में गया था उस रैली में, मुझे आज तक याद है। हम कहते थे, जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। फिर हम कहते थे, इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज आप देखिए, वो सौगंध पूर्ण हुई। उसकी शुरुआत माननीय अडवाणी जी के समय में हुई थी और संपूर्ण मोदी जी ने उसे करने का कार्य किया है। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक थोड़े इस विषय के ऊपर। माननीय खड़गे जी ने कल एक विषय कहा था कि साइंटिफिक होने की बात करनी चाहिए। जब हम साइंटिफिक की बात करते हैं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर बना है ना, उसमें एक बड़ा साइंटिफिक एंगल आया है। वो क्या है कि रामनवमी के दिन उनके मस्तक के ऊपर सूर्य तिलक होगा। अब इसके लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? जो प्लैनेटरी पोजीशन थी कि अर्थ का जो एंगल होगा सूर्य के साथ, उस पर्टिकुलर दिन कैसे होगा। तो इसमें 3 इंस्टीट्यूट ने काम किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर ने, जिसने उस पूरे एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन को सटीक ढंग से किया है। दूसरा है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, जिसने कि उसकी व्यवस्था बनाने का काम किया। और तीसरी एक प्राइवेट कंपनी है जिसने वो कॉन्वेक्स लेंसेज के थ्रू कैसे वो अंदर आएगा और ठीक उसी बिंदु के ऊपर उस दिन केंद्रित होगा, ये व्यवस्था की है। मगर मैं अपने विरोधियों को बताना चाहता हूं, आज तो एस्ट्रोफिजिक्स का इंस्टीट्यूट है, आज तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, मगर यही तो कोणार्क के सूर्य मंदिर में भी था। यही तो अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश में वेद नारायण मंदिर है, उसमें भगवान के चरणों के ऊपर पड़ती हैं। कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है महाराष्ट्र में, उसमें 3 दिन के लिए इक्विनॉक्सेस आते हैं तो देवी के मस्तक से लेकर चरणों तक चले जाते हैं। कर्नाटक के श्रृंगेरी में जो मंदिर है उसमें 12 महीनों में अलग अलग सूर्य की गति पड़ती है। पूछिए साहब, अगर विज्ञान नहीं था तो उस जमाने में इतना सटीक कैलकुलेशन कैसे हुआ जो आज इतने बड़े बड़े सैटेलाइट्स के बाद होने की बात आई है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसके लिए हमें इस विचार पे धर्म और संस्कृति के साथ इस विज्ञान पर भी गर्व करना चाहिए। वैसे मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इसमें विज्ञान का एक और गहरा, आप सबको ध्यान हो कि उसमें 84 सेकंड का मुहूर्त था, पर वो शुरू कहां से होता है? अगर आपने कभी भी उसको सुना हो, लोग को तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा आयु द्वितीय परार्धे। द्वितीय परार्ध ब्रह्मा की आयु मतलब 155 ट्रिलियन ईयर्स। वैसे बिग बैंग थ्योरी कहती है कि 14 बिलियन ईयर पहले दुनिया बनी। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो नई फाइंडिंग की है उसमें बहुत सी गैलेक्सीज ऐसी आई हैं जो 14 बिलियन से आगे की आ रही हैं। तो नाउ दैट थ्योरी हैज बिकम डिबेटेबल। फिर वहां से आते हैं श्वेत वारा कल्प यानी 1.97 बिलियन ईयर्स। फिर आते हैं वैवस्वत मनवंतरे, फिर आते हैं कलयुग यानी 5125 ईयर्स। फिर आते हैं विक्रम संवत में 2081 साल। फिर आते हैं वर्ष में, वर्ष के भाग में, उत्तरायण सूर्य में, फिर आते हैं महीने में, और उसके बाद
वार नक्षत्र होते हुए 84 सेकंड तक। मैं कहना चाहता हूं ये भारत की सनातन यात्रा है जो 155 ट्रिलियन ईयर से लेकर सटीक कैलकुलेशन 84 सेकंड तक का करती है। मुझे लगता है दुनिया में कोई धर्म संस्कृति ऐसी नहीं होगी जो इस प्रकार का करने की क्षमता रखती हो, वो सिर्फ हमारे यहाँ। मगर उसके बाद भी माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कुछ लोगों को, और इस बारे में दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट कार्ल सैगन, जिसने फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट वॉयेजर जो सोलर सिस्टम के बाहर गया है उसका जो मैसेज है कंपोज किया है, उसने लिखा है, उसका वीडियो कोई जाके चेक कर सकता है, नाउ ओनली द एंशिएंट कैलकुलेशन ऑफ हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेशन, कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन। मगर एक बात मैं यहां पे राजनीतिक भी कहना चाहता हूं। मान्यवर बहुत से लोग कहते थे कि श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त ठीक नहीं है, मगर मैं कहना चाहूंगा उन सारे लोगों को देख लेना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने जो यात्रा शुरू की है इसका मुहूर्त कैसा था, जरा इस पे विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि वो जहां से चले हैं, पहले वो चले असम से तो देवड़ा साहब मुंबई में अलग हो गए, वो बंगाल की तरफ उठे तो ममता दीदी ने अलग स्टैंड ले लिया, उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने अलग स्टैंड ले लिया, पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग हो गई, बिहार पहुंचे तो गठबंधन ही पलट गया, आज वो रांची में है। साहब सरकार तो बच गई पर वहां भी मुख्यमंत्री चला गया। तो जरा विचार करना चाहिए उन लोगों को कि उन्होंने ये कौन से मुहूर्त में काम शुरू किया है। परंतु उसके उपरांत जिस ढंग से इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, तो उसके लिए जो हकीकत से मुंह मोड़े हुए हैं, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आंख मूंद लेने से ये खतरा न टल जाएगा, आंख मूंद लेने से ये खतरा न टल जाएगा। अब वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, और शिजरा बिखरने को है इस मोहब्बत की दुकान का, झूठी तसल्लियों से अब संभाला न जाएगा। और ये भी एक संयोग देखिए कि कल माननीय खड़गे जी के मुंह से निकल गया था 400 पार, और शाम को दीदी ने कह दिया कांग्रेस को तो 40 की दरकार। मतलब आप ये सोचिए कि यहां पे विषय आया 400 पार, वहां आया 40 की दरकार, और गठबंधन में मची हुई है ऐसी मारा मार कि प्लीज प्रमोद जी, प्रमोद जी आज गठबंधन के अंदर जिस प्रकार की मारामार है, तो मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन के लोगों के दिल में तो ये विचार आ रहा होगा, मौका आएगा बोलिएगा प्लीज, कि ये रश के जन्नत मुझे कोई आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, आपको मौका आएगा तो आप बोलिएगा। अच्छा चलिए, ममता दीदी ने तो कहा ना 40 की दरकार, इसमें तो कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है कि 40 भी नहीं मिलेंगी। तो महोदय मैं कहना चाहता हूं, आज जिस ढंग की गठबंधन में मारामार हो रही है, तो मुझे लगता है कि शायद वो गठबंधन के सदस्य लोग कह रहे होंगे कि ये रश के जन्नत मुझे अब रास आती नहीं, मैं तो जहन्नुम में ही खुश था मेरे परवरदिगार। और एक बिंदु मैं और कहना चाहता हूं, बहुत गंभीरता से आज हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि साहब वो SC ST OBC के आरक्षण को लेकर, उनकी जनगणना को लेकर बहुत कंसर्न है, उनके मन में बड़ी वेदना है। तो मैं पूछना चाहता हूं, यदि उस आरक्षण के लिए इतनी वेदना है, चाहे वास्तविकता में वेदना है या वोट के तराजू पर तौल कर सियासत के माहौल को खोल कर तब देखा जाता है कि किस आरक्षण का कब इस्तेमाल करना है। अगर ये सच था तो क्या ये सच नहीं है कि इन्हीं लोगों के शासनकाल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से SC ST OBC का आरक्षण समाप्त हो गया, कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया, 81 में फिर इंदिरा जी की सरकार लाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर क्वैश कर दिया, 2006 में मनमोहन सिंह जी की सरकार फिर लेके आई। कहां चला गया, कहां चला गया? इसलिए कि वोट बैंक पे तौला जाता है कौन सा तगड़ा वाला वोट बैंक है, फिर उसके लिए बोला जाता है। जामिया में खत्म, जम्मू कश्मीर में SC ST OBC का आरक्षण नहीं, क्यों नहीं? और मैं बताना चाहता हूं, जो लोग आज कहते हैं समाज के उन वर्गों के लिए, जम्मू कश्मीर इस देश का एक ऐसा इकलौता राज्य था जहां वाल्मीकि समाज के प्रतिभाशाली बच्चे चाहे कितना भी पढ़ जाएं सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकते थे। जब 370 हटी है उसके बाद वो बराबरी मिली है। आप इस सीमा तक दबा के रखते थे और हमने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। यह दर्शाता है मोदी जी की सोच और आपकी सोच में कितना बड़ा अंतर है। और फिर इतना ही नहीं है माननीय सभापति महोदय, बाकी तो छोड़ दीजिए,
ये लोग तो अगर इनके नेता के घर पर भी अटैक हो जाए और लगे कि वो दूसरा वाला वोट बैंक ज्यादा तगड़ा है, चुप्पी साध लेते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के एक एमएलए थे, 2018 या 20 की बात है, अखंड श्रीनिवास मूर्ति, अनुसूचित जाति के थे। उनके घर पर अटैक हो गया और अटैक करने वाले लोग जला के फूंक दिए। उसके बाद भी लोग शांत रहे, उन लोगों को बेल भी मिल गई। वो बेचारे सुप्रीम कोर्ट गए बेल क्लैश कराने, अब तो खैर पार्टी भी छोड़ के चले गए। तो ये तो वो है कि वोट बैंक की सियासत के लिए अगर घर फूंक तमाशा देखना हो तो वो भी देखने के लिए तैयार रहते हैं, इनको उसमें भी किसी भी प्रकार की। और फिर मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, वो कौन था ये बताइए। अगर इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने, मान्यवर सभापति जी, सबकी कोई बात अगर इस देश में ना बोले प्लीज प्लीज। अरे सभापति जी, मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में किस प्रधानमंत्री ने कहा था मुस्लिम शुड हैव द फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया? आपने तो नहीं कहा एससी एसटी ओबीसी और गरीब का होना चाहिए। हमारे मोदी जी ने कहा गरीब का पहला हक है, वंचित का पहला हक है, किसान का पहला हक है, महिला का पहला हक है। यह दिखाता है कि आपकी हकीकत क्या थी, दिल में क्या है और सामने क्या है। फिर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये हकीकत जो बोली थी मनमोहन सिंह जी ने ऐसे ही नहीं थी। कर्नाटक की सरकार ने एक आदेश निकाला है। जिस समय चुनाव लड़े थे तो कहा था कि हम सबको जैसे 2000-3000 की जिस प्रकार की छूट देंगे, चुनाव में आ गए। फिर आदेश निकाला कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग 4 व्हीलर खरीदना चाहेंगे तो सरकार 50% पे करेगी। यानी अगर 4 लाख का होगा तो 2 लाख पे करेगी, 6 लाख का होगा तो 3 लाख पे करेगी। यह है असलियत। एक वोट बैंक के लिए 2 और 3 हजार और दूसरे के लिए 3 लाख। मान्यवर, इसलिए जो पहले था वही आज भी है। और फिर मैं और बताना चाहता हूं, आपस में बात ना करें। हमारे पश्चिम बंगाल के लोग, माननीय सभापति जी, अभी पिछड़ा वर्ग आयोग ने पश्चिम बंगाल की सरकार को तलब किया है। किस बात के लिए तलब किया है? क्योंकि उन्होंने 81 जातियों को जोड़ा ओबीसी में और उसमें 73 मुस्लिम थे। पिछड़े वर्ग आयोग ने पूछा ये कैसे हुआ? साहब अभी तक उसका सही जवाब नहीं दे पाए। और मोस्ट बैकवर्ड के लिए उन्होंने 87 जातियों की रिकमेंडेशन की, उसमें 80 मुस्लिम थी। पिछड़े वर्ग आयोग ने पूछा है और मेरी जानकारी के अनुसार 8 फरवरी को उनके चीफ सेक्रेटरी को, वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया हुआ है। यह मैं देश के सामने रखना चाहता हूं, यह है असली हकीकत। ऊपर से खाने के दांत और दिखाने के दांत और है। इसलिए हम ईमानदारी के साथ, पूरी संवेदना के साथ हम समाज के सभी वर्गों में किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बगैर ईमानदारी से उनके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। और ये वैसे विचार हमारे मित्र लोग अन्यथा न लें, ये उन लोगों की आदत, माननीय सभापति महोदय, पुरानी है। अगर इन लोगों को कोई आपत्ति हो तो मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को जालंधर में अपने भाषण में कहा था, और किसी को समस्या हो तो डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इन 2014, उसके वॉल्यूम 17 और पार्ट 3 में वो पूरा भाषण है, जिसमें वो बड़े दुख के साथ कहते हैं कि नेहरू जी को माइनॉरिटी कम्युनिटी के प्रति कुछ बहुत ज्यादा लगाव है और इसलिए वो दलितों के हितों की अनदेखी कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात के विरोध में नहीं हूं कि मुस्लिमों को नहीं मिलना चाहिए, परंतु दलितों की कीमत पर मिले, मुझे इस बात का बहुत दुख है। और मैं उनका वर्ड कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि नेहरू जी पिछले 20 साल से इस देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। उन्होंने 2000 से अधिक भाषण दिए होंगे और उसमें उन्होंने अनेक बार मुस्लिम समाज के लिए बहुत सारी बातें कही हैं, मगर दलितों के लिए उनको वो देखने को नहीं मिलता। और उनका जो वर्ड है कि मैं मुस्लिमों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, ये मेरा विचार है, परंतु मुस्लिमों को दलितों की कीमत के ऊपर आनंद करवाया जाए, यह मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि दलितों को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। ये डॉक्टर अंबेडकर के स्पीचेस में लिखा हुआ है। और आज वैसे एक और बात बता दूं मान्यवर, आज ये लोग अपने हिसाब से कैसे बदलाव करते हैं। मान्यवर, मैं देश के समक्ष ये कहना चाहूंगा कि जातिगत आइडेंटिटी की बात आती है तो इस देश में एक ही नेता है जिसकी जाति, उपजाति और गोत्र भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया।
क्योंकि तब उनको लगता है कि उसका फायदा हो सकता है। और इतना ही नहीं, जनेऊ भी दिखाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी तब लगा कि शायद इसका फायदा हो सकता है, मगर फिर जब लगा कि कुछ और होना चाहिए तो बदल गए, सिर्फ 5 साल के अंदर बदल गए। और मैं ये भी बात बताना चाहता हूं मान्यवर, जब ये लोग जातिगत विषय की बात करते हैं तो ये भी एक संयोग, इसको अन्यथा न ले। ऑन द लाइटर नोट मैं कहता हूं, इस देश में एक ही प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपनी जातिवाचक संज्ञा अपने नाम के आगे लगाई। हमने कभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कहा था, मगर एक ही पंडित जी हुए भारत की राजनीति में, यानी तब उसका फायदा था तो उस चीज को आगे करना है, आज दूसरा फायदा है तो दूसरे को आगे करना है। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार इनका सामाजिक न्याय का समीकरण बदलता रहता है, ये मैं देश को बताना चाहता हूं, जबकि हमारी सोच पिछले 70 सालों में कभी भी किसी भी प्रकार से बदली नहीं है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, इनके एक नेता थे, कल माननीय खड़गे जी ने एक विषय की बात कही, जिस विषय की उन्होंने ट्वीट की बात कही, वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया गया था और ये भी बता दिया गया था कि वो गलत ट्रांसलेशन था, मगर शायद उनको रिसर्च देने वाली टीम ने ध्यान नहीं दिया। वो जिस सीएम के बारे में बता रहे थे, वो जानते हैं किसका ट्वीट लिख रहे थे? वो उसी के पहले सीएम गोपीनाथ बारदोलोई जी के द्वारा ट्रांसलेटेड का वो सीएम वो लिख रहे थे और उसका ट्रांसलेशन गलत हो गया था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, वो आप इस सीएम की बात कर रहे थे या उस सीएम की बात कर रहे थे? इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है कि उस विषय की जानकारी आधी अधूरी होने के कारण यह समस्या आती। मगर मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, इसी कांग्रेस पार्टी के एक नेता थे, आवश्यकता होगी तो मैं जगह का नाम, वर्ष तो बता ही देता हूं, 2018 में विधानसभा चुनाव में, और इसका न्यूज भी अवेलेबल है, वीडियो भी अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, मोदी जी का नाम लेके हिंदू धर्म के बारे में कहते हैं, ये इनकी जाति क्या है पता है आपको? इनको हिंदू धर्म के बारे में पता है। फिर उमा भारती जी का नाम लेते हैं, फिर हमारे और ओबीसी नेताओं का नाम लेते हैं, फिर कहते हैं इनको कुछ पता होता है, फिर अपनी जाति का नाम लेते हैं, ये सिर्फ हमको पता होता है। मान्यवर, इस ढंग की बात मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर किसी भाजपा के नेता ने बोल दिया होता तो जैसे वो एक गाना था ना, आरा हिले छपरा हिले, ये दिल्ली मुंबई नहीं लंदन न्यूयॉर्क हिल गया होता, दुनिया के समुद्रों में सुनामी आ गई होती, पर आपने उनको विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। यह मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो मौके पर परिस्थिति के अनुसार ये अपना समय बदलते रहते हैं, और इसके बाद अगर आवश्यकता हो तो ये चीज जाकर वेरीफाई की जा सकती है। और यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि ये विचार कांग्रेस पार्टी का आज जो है ये हमेशा से था। आज कितने संयोग की बात थी कि जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था, तो आपको ध्यान है, शायद हमारे बहुत से लोगों ने ध्यान हो तो मैं बता दूं, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री रामलला प्रकट हुए थे, तो उसकी सबसे पहली गवाही किसने दी है? यानी जो लाइट दिखी थी वो बताई थी एक यूपी पुलिस का सिपाही था अब्दुल बरकत। अब्दुल बरकत ने यह गवाही दी है कि उसे दिव्य रोशनी दिखाई पड़ी, और उसके बाद जब वो दिव्य रोशनी हटी तो वहां श्री रामलला विराजमान थे। और जो पैरोकार था इकबाल अंसारी बाबरी पक्ष का, देखिए उसको भी इनवाइट किया गया और वो आ भी गया। अब्दुल बरकत को रोशनी दिख गई मगर इनको रोशनी अभी तक नहीं दिखी। इकबाल अंसारी जो था वो आ गया रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में, उसका तो इकबाल बुलंद हो गया, इनका इकबाल नहीं बुलंद हो पाया, जमींदोज रह गया। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ये किस आधार के ऊपर ये निर्णय लेते हैं। वैसे इसमें भी इनको कोई नई बात नहीं है मान्यवर, ये इनकी समस्या पुरानी है। 24 अप्रैल 1951 को पंडित नेहरू जी ने जाम साहब दिग्विजय सिंह, जो सौराष्ट्र के राज्य प्रमुख थे, लाइक चीफ मिनिस्टर ऑफ टुडे, उनको लेटर लिखा था सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन पे कि मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे इस बात का बहुत कष्ट है कि हमारे कुछ मंत्रिमंडल के सहयोगी जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आई एम ट्रबल्ड बाय दिस रिवाइवलिज्म, ये वर्ड है, यानी मैं इस पुनरुत्थान से बहुत दुखी और समस्या में हूं। मगर साहब, हुई है वही जो राम रचि राखा, जो होना था वो हो गया। और मगर यह दर्शाता है कि जो आज की यह प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति गांधी जी की नहीं थी। गांधी
इस देश की धर्म संस्कृति को मानते थे। नेहरू जी की सोच अलग थी। तो मैं कह सकता हूं कि आज की कांग्रेस गांधी जी की सोच से ज्यादा नेहरू जी की सोच के ऊपर चलती है, इस कारण से यह समस्या आती है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मैं एक उदाहरण और कोट करना चाहता हूं मान्यवर, यह भी सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 में है। 1959 में उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूं, किसी को समस्या हो तो मैं रेफरेंस के साथ बोल रहा हूं। ललित कला अकादमी में वो भाषण देते हुए कहते हैं, मिस्टर हुमायूं कबीर रिफर्ड टू द ग्रेट टेम्पल्स ऑफ साउथ एंड ताजमहल, बट वेन एवर आई गो टू साउथ टेम्पल्स ऑफ साउथ, इन स्पाइट ऑफ देयर ड्यूटी आई कैन नॉट स्टैंड, आई फील सप्रेस्ड। और दूसरी तरफ कहते हैं, बट जब मैं ताजमहल देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी लगती है। सेम उसमें, और ये ऑल इंडिया रेडियो के जो टेप्स अवेलेबल हैं नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में, उसमें भी अवेलेबल है 1959 के उस टेप्स में। ये सिर्फ मैंने बताने का प्रयास किया कि ये सोच इस प्रकार की थी जो भारत की वास्तविक शक्ति और सत्ता को उभरने न देने के लिए थी, और इस कारण से इनकी सोच ऐसी रही। हमारी सोच क्या थी, मैं एक छोटी सी बात कहूं, प्रधानमंत्री जी ने उन सारे श्रमिकों का सम्मान किया, उन पे पुष्प वर्षा की, और ताजमहल के बारे में क्या कहानी है कि श्रमिकों के हाथ कटवा दिए गए थे। और मुझे आश्चर्य है कि जो लोग सर्वहारा की सिद्धांत की बात करते वो उस कहानी को विजुअलाइज करते थे, और सोचिए हमारे दिमागों में कैसे बैठा दिया गया कि हमें वो सही लगने लगा कि वो एक अच्छी बात थी। यानी एक प्रधानमंत्री जो एक मंदिर निर्माण में जुड़े हुए श्रमिकों का सम्मान कर रहा, उस पर पुष्प बरसा रहा है, वह तो गलत था, और हाथ कटवाना सही था। मुझे लगता है वो महिमा मंडन करने लायक था, उसे देखने में आनंद की अनुभूति होती थी। मुझे लगता है कि यह समस्या सोचनी चाहिए। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बात और मान्यवर, ये लोग कहते हैं भाई जातिगत जनगणना कराइए, बिल्कुल अच्छी बात है, पर पहले तो बताइए जातिगत जनगणना रोकी किसने थी, किसका निर्णय था ये 1951 में नेहरू जी का निर्णय था ना, और उस समय तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, क्योंकि चुनाव तो 52 में हुए। और फिर हमने बचपन में सभापति महोदय सुना, इंदिरा जी के जमाने में कांग्रेस की क्या सोच थी, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। राजीव गांधी जी के जमाने में क्या था, 6 दिसंबर 1990 को इसी सदन में मंडल कमीशन का विरोध करते हुए राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती, हमारा नारा है जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं, नेहरू जी सही थे कि इंदिरा जी सही थी कि राजीव जी सही थे, या आज के आपके कुल गौरव सही हैं, या दोनों सही थे, जैसी मौका मिल जाए वैसा सही था? तो मैं कहना चाहूंगा कि एक जमाने में जो पार्टी कहती थी जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, वो अपने पुरखों की बात को धर के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। एक और मैं बात कहना चाहता हूं मान्यवर, एक और विषय, माननीय खड़गे जी ने कहा था कि देश की साक्षरता दर और एक इनकलाब आएगा, 1951 में 18% थी। मैं कहना चाहता हूं अपने विपक्षी साथियों से, इनकलाब आएगा नहीं, इनकलाब आ चुका है। जो जो साक्षरता दर बढ़ती चली गई, भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ता चला गया। मैं आपको सुलभ संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं, भारत की साक्षरता दर 50% क्रॉस की 1991 में, हम मुख्य विपक्षी दल बन गए। इंडिया की पॉलिटिक्स यूनिपोलर से बाइपोलर हो गई। 2001 में साक्षरता दर ने क्रॉस किया 60%, हमारे नेतृत्व में गठबंधन की सरकार आ गई। 2011 में 70% क्रॉस किया, मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार आ गई। 2021 में 80% क्रॉस करेंगे, 400 के बहुमत की सरकार आएगी। क्यों? जो जो समाज शिक्षित हो रहा है, सत्य का साक्षात्कार हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पी लेगा उसके मन में कोई कंफ्यूजन या संशय नहीं रहेगा। और भारत की युवा पीढ़ी उसको देखकर पूरी तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही है। अब यहां पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा। एक और आरोप लगाया जाता है कि साहब ईडी और सीबीआई का बड़ा उपयोग हो रहा है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज हम लोग 2024 में बैठे हैं। आज दो दलों का नाम सबसे याद आता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल, बिहार और झारखंड का। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कई बार हम लोग बचपन में देखते थे, फिल्मों का बड़ा फेमस डायलॉग होता था, 20 बरस पहले की बात है। आज मैं कहना चाहता हूं 30 बरस पहले की बात है, 1994। सिर्फ वो उदाहरण दे रहा हूं जो कोर्ट से प्रूव हो चुके हैं। एकमात्र केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह प्रूव हो गया कि रिश्वत लेकर सरकार बचाई गई, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994, जिस समय
झारखंड के जेएमएम के सांसदों ने नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार बचाई। ये तब क्या मोदी जी थे क्या, अमित शाह जी थे क्या, भाजपा थी क्या? भाई आप तो उस जमाने से ऐसे चलते चले आ रहे हैं, आज खामखा में हम पे आरोप लगा रहे हैं। मतलब 1997 में लालू प्रसाद यादव जी जेल चले गए, हम लोग युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में आ गए लालू जी को जेल से अंदर बाहर देखते हुए, और आज कहते हैं कि साहब वो तो 2014 के बाद प्रॉब्लम है। मैं तो कह रहा हूं 1994 में भी ये साथ थे जेएमएम कांग्रेस वाले, और आज भी साथ हैं। मतलब ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, एक पुराना गीत था ना, तो उसको थोड़ा परिवर्तित कर दें कि शायद ये दोनों दल एक दूसरे से कह रहे हैं कि 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, इसलिए आज आप जिस प्रकार का विभाजन, और मैं एक और बात मैं कहना चाहता हूं, अगर हमारे विरोधियों को कोई आपत्ति है तो मैं विनम्रता से कहता हूं 1990 के बाद की एक लोकसभा बता दें जिसमें इन दलों के नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसी के चक्कर न काटे हो, श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के जमाने से लेके मनमोहन सिंह जी की दोनों सरकारों के जमाने में। तो भाई अगर आपका तो ये भ्रष्टाचार से याराना बहुत पुराना है और इसके लिए सिर्फ मोदी जी पर इल्जाम लगाना है, मैं तो ये बात सही नहीं मानता, ये यथार्थ है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब भ्रष्टाचार को कवर अप करना होता है तो कैसे कवर किया जाता है मान्यवर? मैं एक बात कहना चाहता हूं, करप्शन को एक सी से नहीं कई सी से कवर किया जाता है। उसमें कास्टिज्म भी लाना है, उसमें कम्युनलिज्म भी लाना है और उसमें क्रिमिनलिज्म भी लाना है। इस ढंग से कवर अप किया जाता है करप्शन के लिए। तो जब जरूरत होती है तो देश के अंदर विभाजन की बात करो ताकि मुद्दे से ध्यान हट जाए, करप्शन से बात हट जाए। तो कोई क्षेत्र की बात करेगा, कोई वर्ग की बात करेगा, कोई जाति की बात करेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मान्यवर, इन्होंने जिस प्रकार के डिवीजन की बात कही, तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहता हूं कि आपने, अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। आज एक हमारी सोच, इनकी सोच में क्या अंतर है जो माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से स्पष्ट हुई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब अमृतकाल आ गया है और हमें इस प्रकार के सभी प्रभावों से अपने को मुक्त करना है और उस प्रभाव से मुक्त होकर हमें एक नई दिशा में आगे बढ़ना है। यहां पर एक और बात कही थी हमारे विपक्षी दलों के लोगों ने, वो कहते हैं हम तो बहुजन की बात करते हैं। मान्यवर, ये वास्तविकता में कहते तो बहुजन की बात है पर करते सिर्फ परिवारजन की बात है। ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं चलते, परिजन हिताय परिजन सुखाय चलते हैं। मगर इनकी सोच और हमारी सोच में अंतर यह है कि मोदी जी कहते हैं यदि आप बहुजन की बात करेंगे तो भी कुछ जन तो छूट जाएंगे। तो मोदी जी उस विचार से प्रेरित हैं जो कहती है सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबको मिलेगा, जो सरकार की नीतियां होंगी, सरकार के लाभ होंगे, वो सबको मिलेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का जो भेदभाव हमारी तरफ से नहीं किया जाता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक और आरोप लगाया गया था कि विपक्ष के नेताओं का सम्मान नहीं होता। माननीय खड़गे जी ने एक उदाहरण दिया था, वो उदाहरण अटल जी के प्रधानमंत्री का नहीं था। वो जब वो विदेश मंत्री बने थे तो विदेश मंत्रालय में जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो लगी थी, वो हटा दी गई। तो उन्होंने कहा नहीं, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे वो जहां जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। ये हमारा संस्कार है और मोदी जी ने उसको कितना आगे बढ़ाया। सरदार पटेल की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बना दी। हमने इस बात की चिंता नहीं की कि उनके कालखंड में संघ पर प्रतिबंध लगा था, मगर अफसोस की बात यह है कोई भी आज तक गया नहीं है। अब ये बताइए, भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्हें भारत रत्न मिला। प्रणब मुखर्जी जी कांग्रेस के नेता थे, उन्हें भी भारत रत्न मिला। क्या पद्म अवार्ड तरुण गोगोई जी को नहीं मिला? क्या एससी जमीर जी को नहीं मिला? और अभी आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को मिला। यह ईमानदारी है हमारी सरकार की। समाज के जिस जिस व्यक्ति ने, जिस जिस महापुरुष ने जो जो योगदान दिया, हमने ईमानदारी से किया है। और इनके यहां ये सम्मान की बात करते, इनके यहां तो ऐसा था मान्यवर, इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपनी सरकार में अपने अंदर गठित कमेटी के द्वारा अपने को भारत रत्न अर्पित किया। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इन्होंने अपने नेताओं को नहीं दिया, हमने सबको दिया। ये मोदी जी की विराट सोच और इन चीजों के बारे में हमारा जो नजरिया है वो उसको दर्शाता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये उदारता मोदी जी
कब दिखाते हैं? जब उनके लिए क्या क्या शब्द नहीं बोला जाता है। मतलब मृत्यु का प्रकार से लेके अनेक प्रकार की बातें, कब्र खुदेगी वगैरह वगैरह, जाने क्या क्या चीजें हैं। मगर उससे अविचलित रहते हुए, जैसा मोदी जी ने एक बार कहा था कि लोगों ने उनसे पूछा कि आप साहब छुट्टी भी नहीं लेते, इतनी ऊर्जा कहाँ से पाते हैं? तो उन्होंने कहा था रोज 1 से 2 किलो गाली खाता हूं और उसके बाद उसी से ऊर्जा पाकर पुनः आपकी सेवा में लग जाता हूं। आप सोचिए, आज डिजिटल डाटा का जमाना है। जितने अपशब्दों का प्रयोग माननीय मोदी जी के लिए किया गया होगा, इतना कभी किसी के लिए नहीं किया होगा। इसके बावजूद विपक्ष के जितने नेताओं को सम्मान दिया गया है, इतना भारत के इतिहास में कभी किसी को नहीं दिया गया होगा। इसलिए वो ऊर्जा पाते हैं जो समाज को बदलाव करने में एक महती भूमिका निभाती है। और उस नई सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां अंत में मैं एक विषय ये कहना चाहूंगा कि वो नई सोच क्या थी, एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब हमारी सरकार आई, इस देश में 2 हिस्सों में बहुत बड़ी समस्या थी। देश का पूर्वी हिस्सा है, वहां पर पानी बहुत गिरता है, बाढ़ की समस्या रहती है, बिहार से लेके उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम। जो पश्चिमी हिस्सा है, राजस्थान और गुजरात, वहां पानी कम गिरता है, इसकी वजह से सूखे की समस्या रहती थी। अब मोदी जी ने आने के बाद जो एक नई सोच के साथ सोचा, तो जहां पर पानी कम है तो वहां सौर ऊर्जा की अधिकता है, तो सोलर एनर्जी के अंदर उसके पे एक नया स्वरूप शुरू किया गया। और जहां पर पानी की अधिकता है वहां नदियों के पाट को ड्रेजिंग करके और गहरा किया गया और इनलैंड वाटरवेज की शुरुआत की गई। यानी जो समस्या है उसके अंदर से कैसे एक नया रास्ता निकाला जा सकता है वो देखा। और सोलर एनर्जी में हम वहां पर पहुंचे कि आज दुनिया में हम 5th स्थिति में है सोलर एनर्जी में, जो हमने 2022 में अचीव कर ली है। तो हम 4थे नंबर के देश हैं दुनिया में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में क्लीन एनर्जी के फील्ड में खड़ा हुआ है। हम 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज भी हैं, हम 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं, हम 2रे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने हैं। और डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम दुनिया में नंबर 1 है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम दुनिया में नंबर 1 है। और सभापति महोदय, डिजिटल ट्रांजैक्शन में 2022 में भारत ने 46%, दुनिया का 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हुआ, जो इसके बाद के 4 देशों से मिलाकर उससे ज्यादा था। अर्थात एक नई सोच, सोलर एनर्जी, इनलैंड वाटरवेज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भारत को एक नई दिशा में ले जाने में सफल रहा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस नई सोच के साथ इस अमृत काल में हमें आगे बढ़ना चाहिए और ईमानदारी से एक यथार्थ और स्वीकार करना चाहिए। महोदय, हमारे देश में क्या कोई ऐसी घटना हुई? अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और न्यूयॉर्क सिग्नेचर बैंक डूब गया, हमारे यहां कोई बैंक डूबा क्या? चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी एवरग्रांड डूब गई, हमारे यहां कोई डूबा क्या? चाइना के सबसे बड़े उद्योगपति जैक मा मतलब अघोषित रूप से गायब हो गए। वहां के सबसे बड़े जो बैंकर हैं बान फाओ, वो भी 1 साल से गायब है। इसके बावजूद, और अगल बगल क्या हो रहा है वो तो छोड़ दीजिए, जो पाकिस्तान और श्रीलंका में हो रहा है, इसके बावजूद इन परिस्थितियों में से जिस ढंग से मोदी जी ने इसको निकाला है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको उनका साथ देना चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए। ये काम इतना आसान नहीं था और आज स्थिति सिर्फ इतनी नहीं बनी है। आज हम दुनिया के इकलौते देश हैं जो 2 परस्पर विरोधी देश हमको समान रूप से सम्मान देते हैं। अमेरिका कहता है कि इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर और रशिया कहता है कि इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल पार्टनर। यह स्थिति जो मोदी जी के नेतृत्व में आई है, ये दुनिया में किसी दूसरे देश के पास नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, मोदी जी की तरफ से, कि पत्थर पिघलाने का हुनर मुझे आता है, पत्थर को यूं पिघलाने का हुनर मुझे आता है। मैं वो कतरा हूं कि समंदर मेरे घर आता है। और मैं अंत में यह भी कहना चाहता हूं कि आज भारत एक नए स्वरूप की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम एक बिंदु बस और कह देता हूं, उसके बाद समाप्त करता हूं। आज हम जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया में हमको जैसा कोऑपरेशन मिल रहा है और भारत की तरफ जिस ढंग की आशा भरी निगाहों से देखा जा रहा है, ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिलता था। मुझे याद है माननीय सभापति महोदय, हम लोग बच्चे थे, राम मंदिर आंदोलन के समय कहा जाता जिस दिन राम मंदिर बनेगा उस दिन मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज हकीकत क्या है? आज भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप का कॉरिडोर बन रहा है, राम मंदिर भी बन रहा, कॉरिडोर भी बन रहा है। G20 समाप्त हुआ
तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक दिन एक्स्ट्रा भारत में रुके व्यापार पे बात करने के लिए। आज हमारा सऊदी अरब के साथ व्यापार हो या जो भी व्यवस्था हो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और वैसे जो लोग साइंस में टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं उन्हें पता हो कि अब तेल की टेक्नोलॉजी का समय 20-25 साल का ही रह गया, वो भी खत्म होने वाला है। तो इसलिए अगर आप देखें कि यदि कोई दृढ़ता के साथ काम करे तो क्या कुछ किया जा सकता है, जो हमारी सरकार ने किया है विश्व में इस विपरीत परिस्थितियों में, उसको मैं कह सकता हूं कि यह इतना आसान काम नहीं था। यह वैसा था जैसे टूटे हुए तार से कोई संगीत बजाना हो या पत्थर पे कोई पौधा उगाना हो, मगर वो भी करके दिखाया है मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने। और अब इस अमृत काल के उषा काल में एक नई स्वर्ण रेख भारत के लिए दिख रही है। तो मैं अटल जी की इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं, जो मोदी जी के एफर्ट्स के लिए एकदम सही उतरती है कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं। यानी अरुणिमा की रेख मतलब एक गोल्डन लाइनिंग इन द स्काई। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो इस मेरा मानना है चुनाव में खूब लड़िए, ऊंचे स्वर में हमारा विरोध करिए, पर भारत के विकास के इस गीत को आप भी स्वर दीजिए। इसी अनुरोध के साथ अपना निवेदन समाप्त करते हुए राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। एक मिनट माननीय प्रमोद जी। माननीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, पार्टी ने आपको 20 मिनट दिया था, आपने अतिरिक्त लगभग 30 मिनट 22 सेकंड बोला, जो पार्टी ने पहले से सूचित किया था। पार्टी के समय से ये समय घट जाएगा। अब मैं एक मिनट में आ रहा हूं माननीय प्रमोद जी। जो सूची पहले से थी उस सूची में एक परिवर्तन था। श्री वी विजय साई रेड्डी जी के बाद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी का नाम था, फिर माननीय दिग्विजय सिंह जी का। मैं आग्रह करूंगा आपसे बोलने के लिए। इसके पहले प्रमोद जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कुछ कहना चाहते हैं क्या? पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस रूल के तहत? 238 देख लीजिए। तो आपको तो सब याद रहता है, मुझसे आप बताएं। अरे आपको तो याद रहता है जी, आप बताएं। माननीय सदन में जो कुछ बोला जाए वो सत्य पे आधारित हो, और अगर सत्य पे आधारित ना हो, तथ्य हो, तो जो सदन की कार्रवाई है उसे तोड़ मरोड़ कर नहीं रखा जाएगा। नेता विरोधी दल ने शुक्रवार को बोलते हुए कहा था कि नारा तो लग रहा है 400 सीटों का, पर ये 100 भी नहीं आएंगे। अब कहा जा रहा है कि सिर्फ 400 सीटें, वो बात की 100 भी नहीं आएंगी, रह गया ये तथ्य गलत कोट। धन्यवाद इकट्ठा दे लीजिए। धन्यवाद। एक बात और हो गया। नहीं, धन्यवाद, हो गया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपने मंत्री पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है ये। प्लीज आपने स्पष्ट कर दिया। माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, प्लीज आपने बोल दिया। प्लीज हो गया। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, आपने बता दिया। प्लीज माननीय दिग्विजय। माननीय सभापति महोदय, अभी विद्वान हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो अपना भाषण दिया वो मूल रूप से उसी विचारधारा पर केंद्रित था जिस विचारधारा से वे आते हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर इस देश पर राज किया, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर आज भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश में जिस प्रकार से फूट डालो और राज करो की बात कर रहे हैं, उसी पर उनका पूरा भाषण केंद्रित था। मैं तो उनसे इतना ही कहना चाहता हूं, उन्होंने 500 वर्षों बाद भगवान राम को उन्होंने स्थान दिलवाया। 500 वर्षों बाद। नरेंद्र मोदी जी इतने महान हैं कि 500 वर्षों बाद भगवान राम को वो मंदिर में ले आए, लेकिन नीरव मोदी जैसे लाखों करोड़ रुपए लेकर भागे हुए लोगों को वापस नहीं ला पाए। ये लोग कहां हैं? वो लोग जो आपने वादा किया था कि काला धन वापस लाएंगे, भगोड़ों को वापस लाएंगे, कहां हैं वो आप? बात वही है, इन्होंने केवल अपने पहले हिंदू मुसलमानों को बांटा, अब भगवान राम के भक्तों को आप बांट रहे हैं।
ये मैं आपसे कह देता हूं, प्लीज मैं आपसे कह देता हूं, सीट पर बैठ कर ना बोले प्लीज। सभापति महोदय, अब मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर जहां बाबरी मस्जिद तोड़ी वहां नहीं बनाया, वो जहां कांग्रेस पार्टी ने भूमि अधिकृत की थी और जहां शिलान्यास कराया था वहां मंदिर का निर्माण कराया है। इनका वही मंदिर वहीं बनाएंगे का कारण ये था कि जब तक मस्जिद नहीं टूटेगी तब तक इनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यही भारत जोड़ो यात्रा हमें हम लोगों ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश लेकर राहुल गांधी आज यात्रा कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, हमेशा नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, बाद में जोड़ा सबका विश्वास और अब कह रहे हैं सबका प्रयास। मैं तो आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, हर पहलू पर मोदी जी विफल हुए हैं। हां, इन्होंने बहुत सारी सफलताओं का उल्लेख किया है, लेकिन वो सारी योजनाएं जिन पर ये सफलता का श्रेय ले रहे हैं, ये सारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रारंभ की जा रही योजनाएं थी जिनको अलग अलग नाम दे दिया गया। जनधन की बात की, जनधन का नाम बदला गया, लेकिन छोटे छोटे खातेदारों का खाता खुलवाने की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये बात सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन सर ये कुछ का साथ, कुछ का विकास और कुछ का विश्वास, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाए, क्योंकि ये बड़े नतीजों की बात करते हैं, 200 पार, 300 पार, लेकिन प्रतिशत वोट 40% से कम आते हैं। इसलिए कहां से कह दिया सबका साथ, सबका विश्वास? विश्वास माननीय सभापति महोदय तब होगा जब इस देश के हर वर्ग, हर धर्म के पालन करने वालों लोगों का ये विश्वास अर्जित करेंगे। इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में एक बिल्कुल असत्य बयान दिया है। उन्होंने कभी नहीं कहा जिस बारे में इन्होंने उनका उल्लेख किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के 3 ब्रह्म अस्त्र हैं, 3 हथियार हैं। पहला अस्त्र है ईवीएम, दूसरा हथियार है धर्मांधता और तीसरा हथियार है ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन सफल लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष माननीय चुनाव आयोग आवश्यक है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोगों के मन में एक ईवीएम के बारे में विश्वास कम होता जा रहा है। प्रदर्शन हो रहे हैं, 28 पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ प्रश्न चुनाव आयोग के सामने रखे। नरसिम्हा जी हमारे बैठे हुए, इन्होंने खुद ने किताब लिख डाली थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या चुनाव आयोग का आज व्यवहार निष्पक्षता से है क्या? 28 राजनीतिक दलों ने उनसे मिलने का समय मांगा। 6 महीने में माननीय चुनाव आयोग को 28 पॉलिटिकल पार्टी से मिलने का समय तक नहीं मिला। हम ऐसे चुनाव आयोग पर कैसे भरोसा करेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक तरफ जहां उच्चतम न्यायालय ने अपना सुझाव भेजा कि चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के उनको भी उसका समिति का सदस्य बनाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को रास नहीं आया और उन्होंने यहां से बिल पास करा लिया। जब सारे विपक्ष के संसद सदस्यों को उनको उन्होंने निष्कासित कर दिया था। और क्या किया कि प्रधानमंत्री जी के अलावा प्रधानमंत्री जी द्वारा मनोनीत मंत्री भी उसका सदस्य होगा। इसका मतलब कि 3 सदस्यों में 2 जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा होंगे तो उससे क्या उम्मीद की जाए। और यही नहीं है, आज ये बात साफ हो गई है कि बीईएल के अंदर 4 डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति किनकी हुई है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। सभापति जी महोदय, हमारी मांग क्या है? आज कंप्यूटर साइंस इतना आगे बढ़ चुका है
कि हमारा जो मकसद है वोट डालने का, क्या वो उसका निर्णय हमको मिलता है क्या? आज सॉफ्टवेयर निर्णय करता है कि आपको मशीन क्या नतीजा देती है। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग यह है कि माननीय चुनाव आयोग को वो सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। हमारी क्या मांग है? ये मेरा अधिकार है, एक वोटर के नाते अधिकार है कि मैं जिसे वोट चाहूं उसको वोट पड़े। महोदय कि इस पूरे विश्व में केवल 5 देश ऐसे आज हैं जहां ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहा है। उसमें से ऑस्ट्रेलिया में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो पब्लिक डोमेन में है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी और पूरे मंत्रिमंडल से, क्या कारण है कि वो सॉफ्टवेयर बताने में क्यों इतने परहेज करते हैं? क्या डर है उन लोगों को? आज जब मांग उठ रही है जनमानस में चारों तरफ से कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, उस समय पूरे देश में ईवीएम का प्रचार करने के लिए चुनाव आयोग प्रदर्शन कर रहा है। अरे हमें प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारी बात इतनी सी मान लीजिए, या तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, जो 2018 में कांग्रेस पार्टी ने एआईसीसी रेजोल्यूशन में अपना मत रखा था, उस पर हम आज भी कायम हैं। और यदि आपको ईवीएम से इतना ही प्रेम है तो आप हमारे हाथ में वीवीपैट स्लिप जब नीचे गिरती है तो उसको हमारे हाथ में दे दीजिए और हम जाकर मतपेटी में डाल देंगे। इसमें क्या ऐतराज होगा माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय? मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि दूसरा हथियार इनका धर्मांधता का है। धर्म से इनका कोई नाता नहीं है। हिंदुत्व एक आइडेंटिटी थी, सावरकर जी ने जिसको नाम दिया था, और उन्होंने खुद ने कहा था इसका कोई धर्म का लेना देना नहीं है। लेकिन बिना धर्म का उपयोग करे राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में चुनाव में नहीं जा सकती। और यहां तक कर्नाटक के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी खुद उन्होंने वहां पे आम सभा में कहा, बजरंगबली का नाम लो और कमल के फूल पर बटन दबाओ। चुनाव आयोग, माननीय सभापति महोदय, मेरी आपत्ति इस बात की है कि अगर छोटी मोटी बात भी अगर कोई और अन्य दल का कर देता उसको नोटिस मिल जाता, लेकिन खुले रूप से नरेंद्र मोदी जी ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन किया है, अब इसमें सेक्शन 123(3)(3)(a) का, लेकिन उस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान में क्यों नहीं लिया? आज भी पूरे देश में धर्म के नाम पर ये व्यवसाय कर रहे हैं। वो राम मंदिर का निर्माण जो कि नरसिम्हा राव जी ने रामालय ट्रस्ट को सौंपा था, चारों शंकराचार्य और स्वामी रामानंदाचार्य के रामनिषाचार्य जी 5 लोगों का रामालय ट्रस्ट बनाया, उसके हाथ में क्यों नहीं दिया? किसको दिया? विश्व हिंदू परिषद के हाथ में। और विश्व हिंदू परिषद के हाथ में देकर निर्मोही अखाड़ा जो पूरे तरीके से 10 मिनट नहीं 5 मिनट तक हो गए जो हमारे पास सूचना थी, वो 10 मिनट के लिए। सर देखिए, आपने देखिए मेरी इस बारे में सर मेरी आपसे 5 मिनट का समय और दीजिए, 2 बातें मुझे और करना है। आपको 5 मिनट दिया गया था, ऑलरेडी 10 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट समय तय था आपके लिए। देखिए बात यह है, बात यह है हमारे अब कोई समय ही नहीं, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन का समय हमारे इसमें नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो उनका अधिकार है। अभी जो नियम तय है उसी के अनुसार चलेंगे। प्लीज आप कंक्लूड करें। मैं आपसे कहना चाह रहा था कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का वायलेशन हो रहा है, उस पर कोई संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आज तीसरा हथियार इनका है ईडी, आईटी, सीबीआई, एनआईए का। इसमें मोदी जी को कहते हैं मेरी गारंटी, मोदी गारंटी का एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं। भोपाल के अंदर उन्होंने भाषण में कहा कि मेरी मोदी गारंटी, ये महाराष्ट्र के नेता, उन पर 70,000 करोड़ का घोटाला है, उनको मैं जेल भेजूंगा।
लेकिन 3 दिन बाद क्या हुआ सभापति महोदय? जेल भेजने के बजाय उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। देवेंद्र फडणवीस कहते थे दादा चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, आज दादा जेल में नहीं, महाराष्ट्र के मंत्रालय में बैठकर मोदी जी गारंटी कर पीसिंग 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 कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी दल एंटी पुअर है, शुरू से रही है, कोई नई बात नहीं है। पूरे कॉर्पोरेट्स के पक्ष में इनका पूरी रही है पूरा, और इसीलिए कि हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में असमानता दूर करने का निर्णय था, उससे अलग अमीर और गरीब का असमानता बढ़ती चली जा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसके बहुत सारी बातें हैं, और इसी के साथ साथ हमारे पूरे देश में जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट जो वो लोग हैं उनको जेल भेजा गया। I'll take 2 minutes more. No, sir. 2 minutes. Please 2 minutes more. Sir, 2 minutes. I've already given you. Please. 12 minutes. Withhold. Conclude. Sir, I had spoken to chairman, sir. Sir, मैं उसके तहत ही समय दे रहा हूँ already. Please. I'll take 2 minutes. Conclude. No. Only 2 minutes. Please conclude. Only 2 minutes. I'm concluding. Conclude. Sir, पूरे देश में एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स, इनको अपराध लगाकर बेल नहीं दिया गया। क्या भीमा कोरेगांव के हो, सीए एनआरसी के हो, जेएनयू की, इनके सब के खिलाफ कार्रवाई की। मैं आपसे अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं, इस देश एनडीए के अलायंस पार्टनर्स, बीजेपी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उनके लिए मेरी एक जो कविता 1940 में लिखी गई थी, उसमें पढ़ के वो उसी में खत्म कर वो पेस्टर मार्टिन न्यूमन ने लिखी थी। फर्स्ट दे केम फॉर द सोशलिस्ट and I did not speak out because I was not a socialist. Thank you. Then they came for communists. I was not a communist because I was not a communist, so I did not speak out. Thank you. Then they came for Jews. I was not a Jew, so I did not speak out. But when they came for me, K.R. Suresh there Reddy was no one left for. माननीय श्री K.R. Suresh Reddy, please. माननीय K.R. Suresh Reddy, अब आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है, अब आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है। K.R. Suresh Reddy. Well, sir, my respect for the senior member, that's why I had Please. to wait. Yes. Sir, on behalf of the BRS party and myself, thank you, Chairman, sir, for giving me an opportunity to express my gratitude to the Honorable President for address to the joint session and to express my views on the motion of thanks. Chairman, sir, Deputy Chairman, sir, the President's address started with the new Parliament building and its magnificence and ended with the hope the Parliament would strengthen the aspirations of creating a new and healthy India. I would like to dwell on this particular subject, Deputy Chairman, sir, as Parliament is the fulcrum of our democracy, and more so being the 75th year of our republic. And with you being in the chair, it inspires me more to speak on its functioning, sir. So as the most acceptable form for diverse and acquiring and aspiring new nation, the Parliament was formed in the summer of 1952, and the journey began. And today, when we look back to what our founding fathers conceived for a nation and for Parliament, it doesn't really augur well for us today, sir. The Honorable President's advice to create a new and healthy tradition says it all. These statistics confirm our concerns and bestows upon us to work to stop the deterioration, lest I have not the slightest doubt that this Parliament will be treated by the public outside with utter contempt. Unquote. Sadly, sir, the functioning and the statistics are literally getting us there. The functioning of the Parliament, if we see the first 5 years,
We worked for 130, the first 5 years, 130. Today in 2023, we had the shortest budget session since 1950. Budget session of 2023, sir, 75% of the budget session passed without discussion. And if you look at the monsoon session of 2023, 43% of the scheduled time was utilized. Sir, I'm speaking on this subject, stressing more on this subject because from this very chair, I have seen the Honorable Chairman, the then Honorable Chairman, Shri Venkaiah Naidu Garu, expressing his anguish. We saw him breaking down. We saw his anguish in his tears. So more the reason. And also our present chairman, who has been inspiring us, guiding us, and his words, if I may quote. He said, our present chairman said, the legislature is the most impactful platform for reflection of all shades of opinions. Therefore, there is a need to be receptive to the other points of view. Consideration of the points of difference is essential, is what our chairman sir has been guiding us. The temples of democracy meant for dialogue, deliberations, debate, and discussions are these days hotbeds of disturbance and disruptions. As a consequence, Parliament and legislatures are fast surging into irrelevance. Sir, now this is an anguish expressed not only here. You have been the Deputy Chairman, sir. We have seen the presiding officers conference happening every year. The presiding officers of various state assemblies have been expressing similar sentiment. So the Honorable Speaker Lok Sabha has very explicitly said that the matter cannot be left only for a discussion there, but action should be taken. So it is a time for legislative reforms, parliamentary reforms, and like I said, more so in the 75th year of our republic, the reforms which would come in, I would treat that as India's republic moment, because this house has to stay alive to the needs and aspirations of our people. So I have a few suggestions, sir, in this regard. The suggestions, Chairman, sir, there यहाँ बहुत गर्मी होती है क्योंकि वक्त कम रहता है. हर कोई मुझे वक्त कम है, मुझे वक्त कम है, मुझे वक्त कम है. ये शिकायत आपको काफ़ी सुनाई देती है, sir. So why don't we increase the number of days? The working days of Parliament, the working days of legislatures, let it be increased क्योंकि diversity है, regional parties more and more are coming in. So for them to reflect their ideas, the number of working days should be increased, sir. I was told that in some matured parliaments, the opposition decides the agenda for a day. वो भी आप मौका दीजिए. Let the opposition come and set the agenda for a day. That will be something innovative, creative, and also responsibility lies even on that side equally to ensure that the conduct of the business for the day would be completed, sir. Abhi right, sir, private members bill. Private members bill is not just laid so easily. There is a lot of work which the MP's office goes through. बहुत तकलीफ से बहुत जो constituencies में फिरते, देश में फिरते, संसद, when they acquire all this information, which is not there, which would be good for the country, they come in the form of private members' bills. Earlier, there were instances of private members' bills being accepted. There were instances, I would not like to quote all, but there are instances, sir. So I would suggest that private members' bills may be taken seriously, let them be debated, let the ruling party not stand on prestige. If something good is coming from this side, kindly accept it. Sir, I mean, a matured democracy like the UK, I was told that they have what they call it a free bill, a free voting on a bill. This was suggested by one of our former chairman, Ansari Saab. He said, other than money bills, other than bills relating to toppling the government, let there be a free will, as it is happening in the UK, where there is no whip issue. The members can debate on the bill. The ruling party should be free enough without a whip to express their opinion against the bill given by the minister. So this way, the bureaucratic dependence of the government will start reducing. The realistic approaches and the real needs of the people could be reflected through the bills in the parliament, sir. If this is accepted,
this could be a very good norm for discussion. Then we look at the committees, sir. Now the committees, jab baar jate, everybody says these are mini parliaments. I would say they are major parliaments. Kyunki wahan kuch dissidence nahi rehta. There is a very good consensus. There's a very free flow of opinion. So where the subject is the criteria. Now this is where the committees help the parliament, and through parliament help the government. But unfortunately, the statistics speak otherwise. The statistics say, sir, in the 17th Lok Sabha, only 14 bills have been referred for further examination, that is till the budget session of 2023. As little as 25% of the bills introduced were referred to the committees in the 16th Lok Sabha. When you compare to 71% and 60% referred by the 15th and the 14th Lok Sabha respectively. Now this indicates a declining trend of national legislation being subjected to expert scrutiny. So I would advise that the committees, which are a core strength, may be utilized much more. So bills passed and the rules not being framed. इतना गर्मा गर्मी में आप bills pass करके ले जाते हैं बाहर, मगर उसके rules frame होते नहीं. आप देख रहे हैं subordinate legislation committee के सामने कई वक्त आते रहता है कि अभी rules not framed. So this is something which the government needs to seriously look at, sir. I mean, bills are sacrosanct. Now, Abhi Vijay Reddy Sahab, he was talking about the AP reorganization bill. Yes, AP reorganization bill has been passed 10 years ago. It was passed not merely as a bill. It was passed due to the pressure of the struggle, due to the sacrifice of the people of Telangana, who have been fighting for a separate statehood. Kafi log, people have sacrificed their lives. A lot of employees have lost their jobs. People have left different countries, the good opportunities to come and fight for the cause of Telangana, which was led by our leader KCR ji. Now, 10 साल हुए वो bill pass होके, आज भी लोक सभा, राज्य सभा में questions come कि what are the assurances, what are the promises, they are not fulfilled. They are referred to the assurances committee. The other day, Keshav Rao Saab and myself, we had to with such a heavy heart, we had to look into the review of the bills passed but not implemented in the 10th year, that is the final year. So आप कुछ ना कुछ एक sunset clause लगाइए कि भाई आप 10 साल में खत्म करना है तो खत्म कर दीजिए. अगर करने का नहीं है, come back to the house. If there's a problem, come back to the house. So this is how the effectiveness of any bill, of any legislation would help the sanctity of this house and also the people of the country at large, sir. Of course, we have seen, for example, the farmers' bills being withdrawn. Agar farmer bills aap committee ko bijate, to, things would have been different. But you learnt it the bitter way. Log sacrifice way, you have to come down on your prestige and eventually apologize and say, I'm taking back the bills. That wouldn't have happened if the parliament had functions to its full set principles. Unfortunately, that did not happen, sir. So another major aspect which is troubling us is the anti-defection. Now, anti-defection may last many years, we are seeing how anti-defection is being evaded. Now, I would not like to blame any institute or any person, but the system itself has got that lukana which has to be cleared up. We have seen how anti-defection is evolving to get over the 10th schedule, to get over the problem of anti-defection, how parties are acting in that way. We have seen now, apart from individual shifting parties, now we have to look at this aspect where alliances are formed for elections, alliances fight the elections, and after the election, alliances break up. Wouldn't that reflect as a vote? Wouldn't that reflect as a defection? Wouldn't that go as against the spirit of the persons who have elected them? Because जब दो पार्टी मिलके चुनाव लड़े और चुनाव के बाद अलग-अलग हो जाते हैं, तो definitely this also attracts anti-defection, in my view. So और हम क्या ये सब मुद्दे कोर्ट को ले जा रहे हैं? And when we go to the court, Deputy Chairman, sir, we have seen how overburdened they are. We have seen instances of the Chief Justice of India breaking down. He says, I don't have the infrastructure to tackle so many cases. When they are so overburdened, why do you send it? क्यों ना हमारे एक committee constitute करिए, which keeps looking into it? Why new committee? Why not committee on law and justice?
Why can't they keep seeing? You kindly give the mandate to them. आप देखिए एंटी डिफेक्शन कैसा इवॉल्व हो रहा है और उसके क्या क्या अमेंडमेंट्स लाना चाहिए. They'll keep working on it. We have very eminent people here, senior lawyers, well experienced in public life. Who better than them to help us, guide us? So this is the area where, in my opinion, sir, we should see. So the other aspect of utilizing the platform, for example, Manipur. Now, Manipur has been in news, national news, local news, international news, demands from this side, demands from that side. There's a solution for this, sir. We have the Honorable President. Why not utilize the office of the President? Why not the President address the Assembly of Manipur? If she addresses the Manipur Assembly, that would give a healing touch. She will be the catalyst of bringing all the forces. She will give a leverage. She can create a platform on which the government can progress further on that, sir. But we are losing these opportunities. I have seen, sir, Dr. APJ Abdul Kalam addressing various assemblies. I have seen him addressing my assembly in Andhra Pradesh. He just didn't come and speak. He came with a development 10 charter development plan, and the plan was given to the government. The government said they will fulfill it, and the speaker said, we will refer it to the assurance committee if you don't fulfill it. So that is the strength of legislation, sir, which unfortunately हम बहुत दूर से डरते लेजिस्लेशन के बारे में बात करते हैं जब इतनी ताकत हमारे पास है. तो इसकी इस्तेमाल करिए, ये होना चाहिए. So here रही, sir, in the 75th year of Republic, the legislation. Then comes a diverse country like India. It needs planning. And planning doesn't mean just one plan. Planning, keeping the diversity of our country. So now we have the Niti Aayog doing this for us. Because planning is what kind of strengthens the federal structure of our country, sir. Every state has got different views, different needs. And that can be done only through planning, sir. So in my humble submission, sir, I would say that you need to strengthen the planning. Because earlier I have seen, when the earlier planning commission was there, chief ministers used to come to Delhi, sit before the planning commission, express their views. Planning commission used to advise wealth of 10, almost 11% of wealth in 1990, जो bottom of the pyramid है, जो गरीब से गरीब है, they controlled 11% of wealth, and in 2020 their wealth dwindled to 6%. While you're talking about the fifth largest economy, fine, but where is it going? Why are the majority of the Indians getting poorer and poorer? Because of the planning. जिले प्लानिंग बोर्ड से शुरू करिए, फिर आप नीति आयोग के बारे में बात करिए. इनकम डिस्पैरिटीज रूरल अर्बन में सब हो रहा है सब. एंड सर, and finally, of course, sir, the farming. One major thing for the farming today, farmer का एक issue आता है सर. तो farmer issue 5 मंत्रालयों में जाता है. Finance Ministry for credit loans, your Commerce Ministry for other permissions, WTO,
you have what you call it, the Food Ministry for the FCI control, the GMO for, by the Environmental Ministry, and Government of India keeps control of the Essentials Commodity Act. एक किसान के समस्या के लिए 5-6 मिनिस्ट्रीज है सर, एक से एक कभी कभी टैंडम में काम नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है. So my suggestion is, sir, in the 75th year of India's Republic, see the farmer who constitutes the majority, create the post of a deputy prime minister, taking care of farming because he will have the teeth. Let all the ministries which are dealing with farming be constituted with the farmer, and that would be the India's movement, sir. जब किसान गर्व से कह सकता है कि मेरा काम 2 मिनट में होता है, नहीं तो कॉमर्स मिनिस्टर बोलता है कि खरीफ में आप दान मत डालिए, फिर रबी में होते मुझे दान चाहिए, दान डालिए. ये कोई स्विगी सर्विस नहीं होता ना सर, कि आपको जब चाहिए खाना लाए, जब चाहे जब दान दे, तो वो चलता नहीं. So, and this is no what you call it Chandrayaan science. This is Chandrasekhar's formula. Our Chief Minister KCR has done this. Bundelkhand, Rayalaseema, parts of Orissa, parts of Rajasthan, they were all declared as designated drought-prone areas. It is only Telangana in 2020 stood out not only out of drought-prone, but became the #1 state in the country, earning the highest per capita income. So keeping this in view, sir, I would only suggest, sir, this a couple of 2 further demands, sir, with your kind permission. There is a request that a bench of the Supreme Court may be constituted. So why not in South India? So kindly look at Hyderabad. और मैं हिंदी में कह रहा चारों साहब का, भाई हिंदी को जबरदस्ती मत डालिए. हिंदी अगर मन से बोलना चाहेंगे, अगर दिल से बात करना चाह रहे तो बात करने दीजिए, मगर जबरदस्ती आप हिंदी में पढ़िए, हिंदी में ये कानून की बात करिए, तो ये जरा बहुत तकलीफ होने वाली बात है. सो विद दीज वर्ड्स, डिप्टी चेयरमैन सर, आई थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. थैंक यू, धन्यवाद माननीय श्री KR सुरेश रेड्डी जी. माननीय श्री AD सिंह जी, माननीय श्री AD सिंह. Thank you, Deputy Chairman, sir, for allowing me to speak on this important motion of thanks by the Honorable President. The Honorable President, in the beginning of our address, which is actually the document of the government of the day, has enumerated a lot of achievements and development work which has taken place in the country in the last decade. On listening it appears that the whole of India is on a development path and there is prosperity everywhere. But let us take the situation in Bihar. Bihar is also part of India and there is hardly any development in the life of the common man. The government of Bihar was asking for a special category which is yet to be given to them. And secondly, the Honorable President has definitely talked about India, but what about Bharat, where we are feeding 80 crore people, and we can understand the kind of lowering of their dignity, and उनको हम लोग ने याचक बना दिया है. तो जहाँ तक माननीय राष्ट्रपति महोदया ने बताया है कि हर चीज़ ठीक हो गया है, वैसा नहीं था. और अगर आप बिहार के नए सरकार का हम देखें तो हमारे रिस्पेक्टेड मुख्यमंत्री जी फ्रॉम मेनी इयर्स हैज़ टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू द concept of prohibition, where we are losing because they have created a liquor mafia where at least the state is losing 15 से 20 हजार crore. And of course, and also the sand mafia. So अगर special category हमें नहीं मिल रहा है, तो अगर केंद्रीय सरकार उनको प्रेशर दे के realities of life बताए, तो वो पैसा हमारे स्टेट कॉफर्स में आएगा और हम को फिर स्पेशल कैटेगरी के पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी. बिकॉज आई फील दैट वी आर लूजिंग एटलीस्ट 40,000 crores बाय क्रिएटिंग सैंड माफिया एंड द लिकर माफिया इन द स्टेट. एंड चूंकि अब ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को, और ऐसे भी फेडरल गवर्नमेंट तो हमारा है नहीं, यूनिटरी गवर्नमेंट है, तो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो, जाके देखे कि वहाँ पर सचमुच प्रोहिबिशन है या घर घर अवेलेबल है मेड टू ऑर्डर विथ एनी ब्रांड. और जहाँ तक 25 करोड़ लोगों को जहाँ तक बताया गया है कि
ये पॉवर्टी लेवल से ऊपर हो गए हैं, तब भी हम लोग को 80 करोड़ लोगों को क्यों फीड करना पड़ रहा है? और दूसरी बात देखिए, there is not a single word about Manipur in the address. There is no respite from violence in the state for 10 months. It appears that the central government does not care about the fate of Manipur, especially the hill tribes who are spending desperate times in difficult conditions for the past 8 months. और एक आर्म्ड प्रिविलेज ग्रुप है जो वहाँ पर शॉट्स कैरी ऑन कर रहा है, और जब सरकार उसको देख रही है अंडर आर्टिकल 355, then it's all the responsibility of the central government to come in terms with, to bring peace there. The Kuki MLAs are not attending assembly session as they fear for their life. There is no democracy in Manipur. Now the Home Minister says that he will go for fencing of the borders of states of India and Myanmar to travel. No, there is no democracy. Now the Home Minister wants to fence the 1643-kilometer border with Myanmar and the free movement regime, which allows the citizens of bordering states of India and Myanmar to travel up to 16 kilometers on each other's territory without visa, will be reconsidered. This move is against the interest of Mizoram, Nagaland, who have opposed it. It is high time that these issues in the state be resolved. The new policy also has foreign policy implications and will end PM's Act East and BIMSET integration, Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation. Now coming to India's relation with the neighboring countries. Honorable Jaishankar ji told recently, every country has problem in its neighborhood. At the end of the day, neighbors need each other. Currently, India's relationship with the neighbor is very worrisome. That we have seen in Maldives. We have also already have strained relationship with Pakistan and Taliban in Afghanistan. India was having a very cordial relationship with Nepal and Bhutan. About 2 years back, China had attacked Doklam in Bhutan. After a couple of small fights, India backed off to some extent. At the same time, Bhutanese king requested India to stay away from Bhutan and started a very fairly good relationship with China. The ongoing border negotiation between Bhutan and China has led to a new dimension of Indo-Bhutan relationship. The Chinese are pressurizing them that the Indian army contingent which is based there should be returned back to India. Occasionally, China is grabbing small land portions in Bhutan, and India is not able to intervene to prevent China's violation of Bhutanese territory. There are reports that China influence is increasing in Doklam area, and it acquires a strategic position there. It will be very worrisome for India if we have so far as chicken neck is concerned, because that will stall our movement to northeast. Through its money and economic power, China is influencing Sri Lanka by gifting soft loans. At present, out of the total debt of Sri Lanka, it owes 52% to China. In Nepal also, China is exerting pressures in many ways. With Bangladesh, the Chinese exports have multiplied 16 times in the last 2 decades. Today, China is the largest trading partner of Bangladesh. Myanmar is also under the influence of China. China has renewed its interest in the Chinese Myanmar economic corridor, which will undermine India's advantage in the region. The inability of the government to manage Manipur crisis and a decision to fence the boundary with Myanmar, along with the free movement regime, will further stress the Indo-Myanmar relations. Cybercrime. In paragraph 14 of the address, it has been maintained that Digital India has made the life and business easier in India. Today, 46% of the world's total real-time digital transaction takes place in India, but at the same time, there is a quantum jump of 55% in cybercrime related to cheating cases as compared to last year. Maximum cases are related to job fraud, followed by online purchase frauds. Cases are also increasing in other categories of cybercrime. Innocent people are losing crores of rupees to these cybercrime frauds.
The police do not seem to be well equipped in deal with these crimes, and detention of the conviction rate is very poor. Something has to be done urgently. RBI has taken action against Paytm, but there is a need to look at what value many of these digital middlemen are adding. Why can't the government not promote its own UPI backbone and Bhim application besides PSU bank application? We do not need middlemen. Oil. Petrol prices have increased 45% since 2014, diesel price 70% since 2014. Increased fuel prices are affecting the lives of citizens. The fuel prices were last revised in April 22 when the price of crude was $114 per barrel. Since then, there is no change in the fuel prices. The current financial year, the average crude price was between $93 to $77 per barrel, average being 78.19. Now the crude oil price is $80 per barrel. The oil companies are earning a lot of profit. Government is earning through tax. Why not this profit be passed on to the citizens in India by reducing the fuel prices? What has happened to the market-linked pricing policy in petroleum sector? Prices are not allowed to increase before election, but intensity is also not allowed to fall within the given and to give relief to the people. Cost overruns of the infrastructure projects. Para 15 of the address talks about record investments in physical infrastructure during the last 10 years in various areas. The report of the statistics and program implementation has pointed out that out of the 1,820 infrastructure projects worth 150 crores and above, 431 were reported cost overrun and 848 projects were delayed. 431 cost overrun projects amounted to 4.84 lakh crores. Out of this 848 delayed projects, 202 have overall delays in the range of 1 to 12 months. 200 have been delayed for 13 to 24 months. 323 have 25 to 60 months delay, and the 123 projects have been delayed for more than 60 months. The average time overrun of these 848 projects stood at 36.5 months. However, does it reflect upon the good governance and efficiency of the government in taking up the country to the path of development? We are back to square one. And of course, we have to believe that the corruption in contracting has ended. Ram Raj hai. Empowering Panchayat. Over 65% of the country's population lives in rural area. The performance of Panchayati Raj institutions is therefore critical for achieving the development goals of any government. There are more than 2.5 lakh panchayats in the country. However, the financial constraints have not allowed the Panchayat Raj institutions to realize their potential. The institutions have very limited financial powers and almost fully dependent on government support. They generate very less revenue from the local taxes and fee. The reluctance of the state governments providing financial support in affecting the performance of the local bodies. It is well accepted fact that the decentralization yields better outcome. The leaders and the officials at local levels are in a better position to design and execute projects based on local levels. A mechanism needs to be developed to give local bodies to predictable and meaningful flow of revenue. This will help them plan and execute the programs effectively. Education. Education is the most important for the development of any country. Para 32 of the address mentions the implementation of the new education policy. It also says that to improve the quality of education in government is running PM Shri Vidyalayas. There are 14.9 lakh schools, 75 lakh teachers, and 26.5 crore students in the country. According to the National Achievement Survey 2021, the learning level of students have shown a gradual decline over the years. The Nationalist Annual Status Education Report 22 by Pratham Foundation provides snapshots of children's schooling and learning throughout India. In many states, the students in higher classes like 3rd, 5th, and 8th classes are unable to read text and perform arithmetic tasks taught in class 2. The understanding of arithmetic is higher. In higher class 8 students is quite low. Around 35% of the class 8 students were unable to perform division or subtraction meant for class 2. There is an urgent need to look at the standard of education in the country.
अब मैं अपना समाप्त करने के लिए अटल बिहारी जी का एक कविता पढ़ता हूँ। जो कल थे वो आज नहीं हैं, जो आज है वो कल नहीं होंगे, होने न होने का कर्म यूं ही चलता रहेगा, हम हैं हम रहेंगे या भ्रम भी हमेशा पलता रहेगा। थैंक यू। माननीय सदस्य जॉन ब्रिटास। Thank you, Madam. I am little sad that Honorable Rashtrapati Ji has been made to read out the election manifesto of BJP. As expected, there has been mention about Ayodhya thrice. And in all the speeches, without Ayodhya, without Prime Minister, no speech is completed from the treasury benches. Sudhanshu Trivedi ji, he spoke about astrophysics, Veda, science, everything. Sudhanshu ji, where he has gone? See, after all, he is only a Trivedi. There is a Chaturvedi sitting here. She should be more authoritative about such Vedic sciences. See, Madam, we are passing through very difficult times. The astrologers will teach you science. Government will teach you technology. Technology sahi hai na? Government will teach you technology. Amit Shah ji and Arif Muhammad Khan together will teach you harmony between states and center. This is it. Sir, all of a sudden, BJP has become law-abiding. जितना बार बोल रहे सुप्रीम कोर्ट का बारे में. Even during the Pran Pratishtha, there was a reference to Supreme Court. Are they inflicted with selective amnesia? They are indeed. What did the Supreme Court say in its verdict? An honorable judge who presided over the bench is a member of this house. I rarely see him. Today I saw him for 2 minutes, but he disappeared. I wanted to speak about that. Is it not a fact the same Supreme Court said there was a conspiracy, calculated act, and egregious violation? It further said the desecration in 1949 leading to the ouster of Muslims and its eventual destruction on December 6 constituted a serious violation of rule of law. किसने किया? राजीव साहब, आप लोग ने किया. All of a sudden they forget about it. I mean, they forget about the Supreme Court verdict. Now, see the sad predicament of this country. I will come to you, Rajiv Chandrasekhar ji. I will come to you. His colleague, who is supposed to be a candidate in a constituency, is busy crowning Mary Mada in Trichy. Mary Mada. See? Amarji, I will tell you. At the same time, Amarji's problem is that he is part of a bipolar political party. Bipolar a political party. You object. Please object. I have spoken to Mr. Pandit. That's why I am telling you. Sir, they all speak about Ram. Arey, hamara bhi hai Ram. Aapka thodi hai. Ram belongs to us also. See, my Ram is Mahatma Gandhi's Ram. Of compassion, of harmony and love. You also have a Ram. You also have a Ram. But there is a prefix to that. You know what is the prefix? Their Ram is Nadu Ram. That is a farak. That is the difference between our Ram and your Ram. Sir, nowadays we cannot distinguish between the Prime Minister and the High Priest. Whether our Prime Minister is a High Priest or the High Priest is a Prime Minister. If there is a political program, it will be turned into a religious program. If it is a religious program, it would be turned into a political program. They all accused us of staying away from Ayodhya Pran Pratishtha. What did the Shankaracharyas did? Will you send ED and CBI after Shankaracharyas? All of them stayed away because they didn't want to be part of this political drama.
which you are trying to whip up there in Ayodhya. Sir, madam, let me just say one thing. Mahatma Gandhi in Harijan precisely wrote about them, sir. Precisely wrote about them. To repeat Ramanama and to follow the way of Ravana is actual practice worse than useless. It is sheer hypocrisy. One might deceive oneself or the world, but one could not deceive the Almighty. You cannot deceive Lord Rama, because though you are harping on Rama, your only intention is to reap political benefits, nothing else. Madam, the situation in this country, it's vitiated. You would be surprised, madam. A professor in an organization, in an institute, posted in her social media account that she is proud of Godse for saving India. This is because you are inspiring the academics to say that. Can you ever think about such a situation, say 5 years back in this country? This is where the country has been taken off. Madam, today is 5th. Yesterday was 4th. There is a significance for 4th. You know what is 4th significance? February 4th? That was the day Mr. Rajiv Chandrasekhar, our hero, your hero, Sardar Patel banned RSS. Just on the eve of this day. You understand that? And one more thing. I was so sad to see the Honorable Rashtrapati being paraded behind a Shengol. Is it a modern democratic country, madam? Is it not a fact that Sardar Patel would be turning in his grave because he was instrumental in dumping Shengol, Simhasan, crown to redeem this country from all these monarchies? You want to take back this country to the monarchy era. Shortly, Mr. GC, the Sirbai, you will see a Simhasan here. The parliament would be turned into it. I am always afraid. I am always afraid when the Prime Minister prostrate in front of an organization or institution. Prime Minister, when he took charge as the Prime Minister, he came and prostrated on the steps of Parliament. Kadam kar diya Parliament. Wherever he prostrate, kadam kar rahe. If he calls Mitrom, there is going to be a misery for the people. You know that. What happened during the demonetization. So, you are doing injustice to Mr. Sardar Patel by bringing back Shengol and Simhasans. And of course, the clowns also will be back because palace clowns were there. Naturally, when monarchy comes, Rajiv Saab, palace clowns also will come back. Sir, it's an insult to Republic, of course. Sir, the moment the Kerala, where is Mr. Javadekar ji? Rajiv Chandrasekhar ji is very active. It's said that he is going to be contesting from Kerala. Thank you, sir. Welcome. We are very happy that he should come. He should listen to the music of the people of Kerala. That is what we want him to do. So, instead of giving everything to Mr. Muralidharan, you also should come there. Sir, madam, the point is very simple. Sabka saath, sabka vikas. सभी वक्त को ये सुन के तंग हो गया. किसका साथ है? आप लोग किसका साथ है? किसका साथ है? आपने मेरे साथ है ना? आपने प्राण प्रतिष्ठा किया. I don't want to dispute about pran pratishtha because these are times when human beings will have to give pran to gods. That is it. But the primary responsibility of the Prime Minister is to give pran to the citizens, not the gods. He should obviously stick to his duties. He should go to Manipur and conduct a pran pratishtha for the citizens. That should be done first. Instead of that, don't create political drama to just get some votes. Viplo Babu, I know you are nodding your head. You are in agreement with me. You cannot dispute me. I know that. Sir, madam, now the pastime of BJP, RSS, is dismantling institutions. Institution after institutions are dismantled. We all talk about Suresh Reddy ने बोल दिया ये पार्लियामेंट के बारे में अभी क्या डिबेट चल रहे कोई
perusal bills, due diligence है. What happened to the standing committees? कुछ हो रहे है प्रियंका मैडम? कुछ हो रहे है? She has not even. Standing committees कुछ हो रहे है प्रियंका मैडम? कुछ हो रहे है? She has not even. Standing committees कुछ हो रहे है प्रियंका मैडम? कुछ हो रहे है? She has not even.